when you're ready to go live. बता तो देते यार. I haven't gone live from here. Periscope का live नहीं मैंने किया अभी तक. Oh. Tell me when you want to go live. अच्छा ठीक. Wait, let me just. Lovely. हम लोग भी बोल सकते हैं. बस. हाँ बोलो यार खोल के. बल्कि तुमने आना होगा तो आ जाना यार. ये क्यों पिक हो रहा है फिर? तो माइक से पिक हो रहा है ना भाई. नहीं माइक बंद है. ये इसका इंटरनल माइक हो रहा है. हाँ that's fine. इतना नहीं होगा. Gaming mic. Can you play the just play something on the laptop to see if it's picking it up. ये हमने कहीं उसके लिए टैब्स के लिए हमने शायद चेंज नहीं की थी सेटिंग्स. नहीं यार टैब्स मेरे लैपटॉप पे थी वो. ओ बॉबी. देखो पिक हो रहा है. नहीं हो रहा पिक. नहीं ये नहीं है कुछ और है. ये माइक इसका अपना माइक है, इंटरनल माइक है. हाँ तो इसको कैंसिल करो ना. तुमने ऑडियो की सेटिंग चेंज की अपनी? मैंने वो चेंज कर दिया. चेक करो. ब्लू स्नोबॉल आई शो कैप्चर माइक ऑक्स डिवाइस टू हुआ भाई यार. समथिंग इज ऑफ. खान साहब की कोई चूसी आई होगी. हाँ और नूनली को गालियाँ दे रहा होगा. यार ये बंदा हर वक्त इतने गुस्से में क्यों रहता है? खैरी ये ऐसे ही है. नहीं बल्कि बंदा बहुत नाइस है. Yeah, I've met him. He's like one of the nicest people. But like on Twitter, he's so angry all the time. एक है यार खैरी. एक सेकंड. ओ लवली बॉबी. माइक्स ऑन है. भाई लाइव जा रहे हैं हम सब. अच्छा वो चल रहा है कि नहीं चल रहा? हाँ. मैं करता हूँ फिगर आउट उसको. तो पहले लाइव चले जाओ. चार हमारे शॉर्ट खसी हैं बेसिकली. भाई तो डेड हुआ होगा बिल्कुल ही. क्या तुम लोग बातें करना शुरू करो ना. तो पीछे कुछ आवाज ही नहीं अच्छा होगी. मुझे एयर ड्रॉप करो क्राउड साउंड. मैं कुछ करता हूँ. कर दिया मैंने. Who's watching on YouTube by the way? Can you mute the mic because we're live on YouTube? क्योंकि फिर फ्लैग वैग हो गया ना. वो तो वैसे भी हम हो रहे हैं पर क्या पता है. हाँ यार. नहीं बट हमने वो देखा तुमने बैट वुमन का टीजर? मैंने भेजी हुई तुम्हें WhatsApp पे भेज दिए. सब लोग आउटरेज हुए हैं. WhatsApp पे नहीं. WhatsApp पे फोन डेड है यार. इट्स रूबी रोज. एयर ड्रॉप. बट दे मेड हर I don't even know how to do that, dude. तो इसलिए हाँ लेकिन बैट वुमन लेस्बियन होती है. I think in one comic book हाँ. she is सो बेसिकली पीपल तुम्हें पता है outraged होगी. आउटरेज फेक शुरू हो गई. Outrage के celebration. comic book boys ने बोला होगा ना कि oh no. हाँ ये तुमने मैंने क्यों. इनको ये भी है कि Sent. they said कि किसी Marvel superhero also दो करेंगे मार्वल के. एक करंट और एक probably what's her face. Yeah. Valkyrie. I don't जो know. भी आया है स्पाइडरमैन नहीं वो जो थॉर के साथ नहीं होती वो लड़की. हाँ अच्छा वो टेसा. Tessa Thompson. वो तो बायश है ना. यार क्लिपिंग का सॉफ्टवेयर है तुम्हारे पास? लवली बॉबे. क्या करना है क्लिप? ओपनिंग स्टेटमेंट क्लिप करके हम डाल देंगे ना फौरन. ओपनिंग स्टूडियो तुम लाइव बोलोगे ना. हाँ तो जिस अभी मैं बड़ी बोल कैप्चर रहे ऑन कर दूंगा. बट मेरे पास वो नहीं हुआ होगा. ठीक है. कैन यू डू क्लिप्स? ट्विच पे ट्विच पे क्लिप ऑन एक कर दे जल्दी से इसका. यार 3 मिनट मेरे तो चाहिए. हो गया हेड ड्रॉप. हुआ नहीं हुआ. रिसीव हुआ नहीं हुआ. ये पूरी नहीं इसको चाहिए होंगे इसको. Just take mine Ahmed. In my bag there's right there mine. ये वाले हैं व्हाइट वाले ले लो ना. ये बोल ले. हाँ ये ले लो ये मेरे हैं. ओए स्विंग हुई. Is it picking up? चलो भाई. हाँ सही तो है. शुरू का क्लिप करना है ना. अभी ट्विच पे ऑफलाइन हो. कहीं हम ऑनलाइन हैं इस वक्त. YouTube पे है. मुझे लिंक दो. YouTube forward करो. YouTube इसको फॉरवर्ड करो. चेक करो क्राउड है उसके पास ऑलरेडी. लिंक में देना. हाँ
But also check कि वो soundboard भी चल रहे हैं नहीं. Yeah. Everything from the computer needs to be picked up. YouTube पे हमारा चीजें पेश ना लाइव या कुछ ऐसे है कुछ भी नहीं है. Can you paste your phone चाहिए तो काम right off from साथ काम. Yeah, it's a Linktree link. Yeah, okay. आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ, आवाज आ रही है. Crowd sound? Crowd sound भी. Okay, can you check if the नहीं, किसकी? हमारी भी आवाज आ रही है. हाँ तो mic तो on है ना? माइक नहीं माइक ऑन नहीं है. Yo, it's working. It's working but But you can hear yourself and me? That shouldn't तो happen. फिर ये इसको पिक कर रहा है. One. माइक को Everything is पिक there. कर Crowd रहा है. sound is there. Our voice is there. सब कुछ तो है. इंटरनेट लाइक बंद कर दो ना सेटिंग में जाके ऑडियो सेटिंग में जाके. यार अगर मैंने इसको कहीं भी प्रोजेक्ट करना है. साउंड पे जाओ. नहीं इसमें नहीं. मैक की साउंड की सेटिंग में जाओ. इनपुट में उसका लेवल बंद कर दो. नहीं वो मैंने चेंज कर दिया आई शो यू के लिए. पर वो क्यों नहीं आ रहा है इसमें? चेक कर लो ना. ये तो बड़ी Cause- सीरियस गेम्स के बारे में बात कर रहे हैं यार नहीं आई यूज्ड टू डू दैट. Really? हाँ मैं हमारे कैमरास थे ना. आई शो यू पे आया हुआ है. हाँ ठीक है. तो इसमें वही DVR जो internal mic है ना, इसको कम कर दो. मैं पहले चैनल 2-3 बार ब्रॉडकास्ट किए होते हैं. अच्छा तो करो. अब मैं बंद कर दो. पूरा मेरा अब देखो क्या होता है. DVR में बंद कर दो ना इसको. स्मार्ट अब देखो क्या होगा. Device manager में जाओ. Okay, save it. Did it save? सेव हो जाता है खुद ब खुद. अच्छा, can you hear us still? compatibility का बड़ा मसला होता Delay, delay. हाँ ठीक है. No, no. Can you hear Can us you- now? Check. Motherfucker. What? Can you hear me? ये पूरी ऑडियो क्यों बंद हो गया? अच्छा लूप. लूप पे है. आ रही है आवाज़ किसी की? मेरी आ रही है? क्या है? मेरी गाली आई? Can you hear us still वाली बात आई है ना. अच्छा अब देखो ना. अब इससे delay ना wait करो. सुनते रहो. सुन रहे हैं पूरा आ गया Motherfucker भी आ गया. बस ठीक है फिर नहीं आ रहा. Motherfucker आ गया. Motherfucker Jones. लाइव में यार सब आ रही सारी आवाजें आ रही है. 3 people watching now तीसरा कौन है Oh motherfucker. कोई मैं माइक बंद तीसरा कर रहा बंदा हूँ. कौन है It works. के लिए तुमने
5:30 we're safe. Because we're giving them 1.5 hours to move. The Sharjah Stadium as Ben Dunk sits back in the crease, reads the slower delivery, and launches this over mid-wicket again. That is a poor over. फास्ट बॉलर तो हीरा होता है यार, बैट्समैन तो कोयला होता है उसके सामने, क्या बात है। अगर बाउंड्री लगे ना तो बॉयज मजा आ जाएगा। Oh, I think that's a six. That's a huge six. यार बॉयज थोड़ी फट रही है। Karachi is behind their son. The Prince of Karachi has returned, and he is victorious tonight at the National Stadium. He will lead the Purple Force, the Gladiators, into the Coliseum of Fire. Bowling, superb change of pace, a gem of delivery.
4 years later, the cricketing world crescendos again to crown the kings of a sport where results echo well beyond its 22 yards. Sarfraz Ahmed will lead his men out to Trent Bridge, a fortress in which the Mercurials haven't won since 2001. But his Stani army differs in stature from heroes of past, with a sword-wielding top order that numerically could be Pakistan's best ever, a fielding machine configured to modern standards, and a fast-bowling phoenix that may have flown too close to the sun. Agonies from 1999, pain from 2007, and questions from 2011 ring loud in the ears of the Pakistani faithful. But with the second youngest squad at the World Cup, Shadab Khan, Hassan Ali, Shaheen Afridi, Imam ul Haq, and Babar Azam will look to build a legacy free of the ghosts past. It is a group of boys that became great men in the rich history of Pakistan cricket, with a Champions Trophy victory that's matched a script of a teenage sports movie. The World Cup, however, is a beast that only the great Khan's men managed to tame. Just like in '92, Pakistan begin their quest to rule the world today against the mighty and powerful West Indies. The men from the Caribbean will line up in maroon tops, maroon trousers, and Pakistan are decked out in a dark green from head to toe. I'm Asad Afzal at Change of Pace, and with me to kick things off is AZ Khwaja throughout what should be an incredible World Cup. यस वाह यार क्या कमाल की स्पीच दी है. तो मॉर्गन फ्रीमन हमें बुलाना चाहिए था इतनी आउटस्टैंडिंग स्पीच के लिए, बट नॉट एन आउटस्टैंडिंग स्टार्ट फॉर पाकिस्तान एट द वर्ल्ड कप एट ऑल. 36 for 2, Pakistan 6.5. This is carved over the inner field towards point for 4. Pakistan have now 40 for 2 after 7 overs. The run rate not too shabby, but they have lost 2 wickets already. And the quickest player for Pakistan is not in the starting 11 today. AZ, what do you make of that? यार ये बहुत ही स्ट्रेंज इन्होंने प्लेइंग 11 आज खिलाई है. हफीज़ को ये 6 पे खिला रहे हैं. आसिफ अली जो आपके पास डेजिग्नेटेड हिटर है वो नहीं खेल रहा. शुएब मलिक हैज़ बीन ड्रॉप्ड. शाहीन शाह अफरीदी हैज़ बीन ड्रॉप्ड. वहाब हैज़ कम आउट ऑफ नोवेयर स्ट्रेट इनटू द प्लेइंग 11. तो कुछ समझ नहीं आ रही पाकिस्तान के ये टैक्टिक्स क्या हैं इस वर्ल्ड कप में कि एवरीथिंग लुक्स वेरी मडल्ड एंड नोबडी इज़ सिक्योर इन देयर रोल्स एट ऑल. बट सो फार 40 for 2 थोड़ी अटैकिंग गेम खेल रहे हैं पाकिस्तान. हारिस सुहेल आते ही चौका लगाया. बाबर ऑल्सो लुक्स इन गुड टच, बट शेल्डन कॉटरल फॉर द विंडीज़ इज़ बॉलिंग रियली वेल. इज़ गेटिंग द बॉल टू मूव. और ड्रे रस ने हमने देखा आते ही फ़खर जमान को आउट कर दिया. वेरी अनलकी टू गेट आउट. इमाम नेवर गॉट गोइंग टुडे. बिल्कुल ही बहुत ही नर्वस और एजी लग रहा था, एंड ही इवेंचुअली गॉट आउट. Andre Russell in a peculiar role for himself and as an opening bowler for the West Indies today. He's picked up a huge wicket of Fakhar Zaman, who looked pretty good, but unlucky. We've seen him take a lot of blows to his head in the Champions Trophy in this country earlier in 2017. But this time he wasn't as lucky. Ricocheted onto his stumps for Russell's first wicket. Pakistan still experimenting with their side. They've had 4 years to find what their best 11 would be for today, but they still haven't gotten answers to the questions that they had asked. The batting order still looks a lot better than the bowling department, but the exclusion of Asif Ali doesn't really make sense to me. It's again very pedestrian the way they've gone about the team selection, because I personally think that Shaheen should have also been in. He's bowled fairly well for the past 2 years, and would have been a good addition to the squad instead of someone who's fairly fresh like Wahab Riaz. बिल्कुल यार, शाहीन शाह आपका की बॉलर रहा है. न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ उसने विकेट्स लिए हैं. साउथ अफ्रीका टूर पे भी उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था ओडीआईज़ में. तो अब थोड़ा से 1-2 मैच उसने स्ट्रगल किया तो आपने उसको फ़ौरन ही बाहर कर दिया. फिर आपका मतलब गेम प्लान है ही क्या? अगर शाहीन शाह हु वाज योर सेवियर विद द न्यू बॉल, अगर वो भी आप लोगों के लिए ठीक नहीं है. आमिर तो हमें पता है वो फुली आउट ऑफ फॉर्म है इतने अरसे से. जुनैद खान भी आपने घर वापस भेज दिया. फ़हीम अशरफ भी भेज दिया. Doesn't show confidence in the young man, does it? समझ नहीं आ रही कि सारे पेसर्स आउट ऑफ फॉर्म है. तो अगर आप उनको इंडिविजुअली नहीं ब्लेम करोगे तो फिर किसको ब्लेम करोगे? बॉलिंग कोच पे फिर जाता है कि यार तुम कर क्या रहे हो कि एक भी अच्छा बॉलर नहीं है हमारे पास इस वक्त. कि वहाब रियाज आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं 2 साल बाद पाकिस्तान के लिए खेल रहा है और फॉरन 11 में आ गया है यार. Maz Kidwai on Twitch, welcome back to the stream, Maz. He's been with us since the PSL days. He's saying, what a starting speech. Well, we hope Pakistan's World Cup goes as well as that does. 42 for 2 after 7.4. Run rate 5.48. Russell's got 1 off 4. Interesting factoid about the two teams playing today. Both have each man on their side that has the highest runs and the highest wicket takers. So for the West Indies, Chris Gayle has the most runs and the most wickets. And for Pakistan, that man who's not playing today is Shoaib Malik. वाकई यार ये काफ़ी इंटरेस्टिंग. अब शोएब मलिक बेचारा 4 साल से रोता रहा कि मैंने वर्ल्ड कप खेलना है. एंड ऑन द ईव ऑफ द वर्ल्ड कप he's found himself dropped from the side. I mean, he's in the 15. I think he's lucky to do though. वो कहते हैं ना कहावत है men plan and God laughs. तो वही वाला सीन हुआ है बेचारे शोएब मलिक बॉय के साथ. उसके 2-3 फैंस जो हैं बहुत ही वोकल हैं, वो भी बेचारे बहुत नाराज़ हैं. सुना है सियालकोट में बड़ी तोड़ फोड़ चल रही है. शटर डाउन हड़ताल हो चुकी है 3 दुकानों में
कि भाई हमारे शोएब मलिक हीरो को नहीं खिलाया उन्होंने. Gopimil Kowal also joining us on Twitch asking who is dropped for Asif. It's a good question. This is what I was wondering last night because I wanted Asif in the starting 11. I thought we were going to go in with two Pacers, but two Pacers is a fairly thin batting lineup because we don't have a fast bowling all-rounder at least. So who do you drop? Who do you drop for यार Asif अब Ali's उन्होंने वही inclusion? किया ना कि हारिस को अगर इन्हें खिलाना सो देव प्लेड हफीज़ फॉर हिज बॉलिंग बेसिकली. तो अब वो अब नंबर 6 पे ये गैम्बल कर रहे हैं कि हफीज़ आके भाई आगे क्विक रन्स देगा जो उसने कभी अपने करियर में नहीं किया. ही इज़ ओनली बैटेड एट 5 और 6 में भी 3-4 टाइम्स इन हिज करियर. तो वर्ल्ड कप में आप उसको लेके कि हाँ भाई आपने 6 का रोल एग्जीक्यूट करना है. व्हेन द होल टाइम यू ओनली ट्राइड हिम एट 4 और ही इज़ बैटेड इन द टॉप ऑर्डर. तो हमारे सारे ही जो गेम प्लान्स हैं ना सारे हवा में ही लग रहे हैं इस वक्त. So do you think basically you're saying that Haris makes way for Asif? हारिस देखो आप रेगुलर पिछले मैचों में नंबर 4 खेल रहा तो आई वुड से हफीज़ एंड इट वाज हफीज़ वर्सेस आसिफ एंड शोएब मलिक बिल्कुल भी उनके कैलकुलेशन में नहीं आया. Yeah, but then again, there's still a lack of the fact that who's going to make way for Asif Ali. We still haven't answered that question. यही है वही हुआ ना. हफीज़ ही आप देखे ना था हफीज़ ही उसकी जगह है. आसिफ नहीं खेला. 6 पे कौन है? आसिफ होना था. अब हफीज़ खेल रहा है. But losing Hafiz does mean that you lose a bowling option, doesn't it? वो तो आप ठीक है. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे पिक्ड हारिस टुडे. अब होपफुली ही मेक्स 100 एंड शट्स आवर माउथ्स. लेकिन देखा जाए तो आपको ज़रूरत नहीं थी हारिस सोहेल को इस लाइनअप में, स्पेशली व्हेन यू नीडेड हफीज़ इज बॉलिंग. तो उन्होंने बॉलिंग थोड़ा इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है. अब देखते हैं क्या होता है यार. Off the pads this time from Haris Sohail. He's 5 off 3. We'll move on to 6 with that shot. And they're coming back for 2. So good running from Pakistan. So our England correspondent Tasneem, who did a really wonderful article on the grounds that the World Cup will be taking place off, says that the Trench Bridge is one of those grounds that's obviously more high scoring, and but it also leaves enough room on the square boundaries to pick up those twos, unlike other grounds that have short boundaries, so you can only milk out those singles. यार कॉटरल होल्डर रसल ब्रैथवेट देखा जाए तो बहुत हिटेबल इनकी बॉलिंग लाइनअप है. बस कोई बंदा पूरा खेले. Yeah. There shouldn't be any fear. हम इंग्लैंड के जो बॉलर they're all quicker than them. Mark Wood, Jofra Archer and all these guys are easily quicker than them. और उनको कुट के मार रहे थे. तो थोड़ा बस आपको सेल्फ बिलीफ होनी चाहिए. You can easily make 300, 320 plus on this pitch. Yeah, easily. up his drive from Haris Sohail, but doesn't carry to the fielder at cover, so that's going to be a dot ball. 44 for 2 now. And again, I think it's not an element of how good the West Indies have bowled today. It's also an element of the World Cup nerves that some of the Pakistani boys will have. You have to remember that I think out of the 15 in the squad, only 3 of them or 4 of them have played a World Cup before. I think हारिस ने पिछली खेली थी. सरफराज ने भी Haris, खेली थी. Sarfraz, Wahab, Malik and Hafiz. That's it. मलिक तो आई थिंक 2007 के बाद अब वर्ल्ड कप खेल रहा है. उसको तो बेचारे 2 एडिशंस उसके पूरे में हो चुके हैं. Right. So it's just those 4 lads that have World Cup experience, and from those only Sarfraz, Hafiz, and Haris are playing. Even Haris's World Cup experience was fairly limited, and Sarfraz was only drafted in as a substitute under Waqar Yunus's reign. So it's a very young side. It's a side that knows how to win though, because they have a Champions Trophy under their belt and are fairly good in the T20 format. But this is, like I said in the opening remarks, this is a beast of its own. और बहुत प्रेशर है हमारे एस बैट्समैन हमारे जो स्टार प्लेयर हैं बाबर आजम पे. आई एम एक्सपेक्टिंग कि इंशाल्लाह इस वर्ल्ड कप में 300 तो मारेगा यार. Top scorer of the World Cup for you? ऑफ कोर्स यार, इसमें तो डाउट ही कोई नहीं. For Pakistan or for the tournament For though? the world, यार हम जीतने आए हैं यार. हम ऐसे थोड़ी नंबर्स थोड़ी हम करने आए हैं. That's a good attitude though. कार्लोस एक्स लाहौर कलंदर बंदा अपना. Brathwaite with a fairly slow delivery, 125 kilometers per hour. This is just They have angled not away onto played the leg side. O'Shane and they haven't played Kemar Roach and all these express pacers. ये सारे इन्होंने overcast conditions में थोड़े अपने line length वाले बंदे खिलाए हैं. तो पाकिस्तान can take advantage यार, थोड़ा positive खेले तो. Well, let's take a look at what that means in terms of the West Indies. West Indies are, they've got Shen Gabriel. He's not playing today, is he? So Shen Gabriel would be with the key pacer for me. O'Shane Thomas isn't playing, and Cottrell, who is designated as a backup pacer for the Windies, is actually starting today. Holder and Roach as well. And again, in terms of their batting, it's all about them going hard at the power play at the first. Gale has slowed down his scoring respectively, but he still bats he still bats deep to get the big hundreds. बिल्कुल यार, गेल तो हमें पता But है. the key batsman for the West Indies is going to be Shai Hope, right? And the middle order is so good यार. Darren Bravo, Shimron Hetmeyer और Shai Hope, इनके जो 3, 4, 5 young batsmen. Lewis and and Pooran. hungry batsmen. Lewis and Pooran too. Lewis भी बहुत खतरनाक player है. उसने हमें बड़ा मारा हुआ है T20s में.
तो दे हैव अ वेरी यंग एंड वेरी हंग्री बैटिंग लाइनअप. तो उनका ये नहीं है कि भाई थोड़े जेडेड फ्रेंचाइज स्पेशलिस्ट हैं जो सिर्फ बस अपना नाम बनाने आए. Bouncer. इनमें थोड़ी भूख है कि थोड़े यार हमने प्रूव करना है अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे. Bouncer from Andre Russell that's left alone from Babar Azam. And a nice crowd in from the Windies. Always some beautiful colors that they bring in with the cultures of the Caribbean. यार काफ़ी इनके कलर्स जो हैं वो पाकिस्तानी कलर्स से भी मिलते हैं. You know, some of the outfits that we see in Sindh and in rural Punjab. A very colorful expression. आपको पता है it's like 7 or 10 islands है जो मिलके टीम बनती है. तो of course Another bouncer from Russell, and he's bowling to foes that he's met against Peshawar in the PSL, and he's keeping his short pitch barrage consistent through all of his overs. अब हारिस को भी थोड़ी मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए कि उसने 2 बाउंसर अपने करा दिए तो अगली बॉल आगे ही देगा. तो देख के खेले. Yeah. Just take a look at the wickets in terms of where the West Indies rank. We've mentioned Chris Gayle, but that's largely due to the fact that he's almost played 300 one-day internationals. But right after that, Jason Holder, who's played 95, has got 121 wickets, and then after that, Kimar Roach with 117. So they, again, much like Pakistan, as Russell follows this up with the third bouncer in the over. I don't know when these are going to get called, because you only get a bouncer in an over in one-day internationals, and there's a cheeky look by the umpire. A clear and obvious anti-Pakistan conspiracy on show here, यार. क्या 3 बाउंसर कितने 500 बाउंसर मारने उसने यार. Right, so Carlos Brathwaite, Shen Gabriel Cottrell, they've Carlos. got 31. आपको याद है हमारे सर्विस का ऐड आता था Carlos. Yeah, I won't be able to. Don Carlos. Oh, and I think that's gone. He's picked up a wicket and a second wicket for Andre Russell on the day. A 4th bouncer in the row. The umpires really got to have a discussion about this. There's only 1 allowed in the over, but Russell's bowled 4 on the trot. यार ये क्या सीन था यार, मुझे समझ नहीं आ रही है. Honestly, this has to be checked. That is the 4th bouncer in the over. But again, what you said about Haris Sohail, he has to leave that alone. He knew that was coming. 3 bouncers on the trot. It's a clear plan to get him with a short ball, and he expects this one to come full and straight, and he follows it straight to the keeper. But why hasn't there been a check for the no ball? यार छोड़ो यार. अब मसला है कि हमारे हारिस सोहेल को खिलाने वाले गैम्बल फेल हो गया. सरफराज पे अब आ गई है बात. कैप्टन कोरेजस 45 for 3 यार. क्या nightmare start for Pakistan. 45 for 3 for Pakistan. I'm a little confused about that Haris Sohail wicket, why that wasn't called a no ball, but regardless if it was or not, that was a very poor cricketing decision from Haris. He'd already faced 3 bouncers. I think he was, like you said, Khwaja, he was expecting the full delivery, but he just followed the short ball straight to the slips. That is poor batting from Pakistan, poor from Fakhr and poor from Imam and poor from Haris. Another typically Pakistani start to a world tournament, 45 for 3. However, it does beat the start that we had to the West Indies in 2015 where we were 1 for 4. So it is slightly better than that. It is slightly better than that. और वो काफ़ी depressing scene था. फजर के वक्त वो मैच शुरू हुआ था. I was in Saudi for that tournament, and that was an awful. तो समझ से बाहर था कि ये हो क्या रहा है. That was I think that for me that was. Jerome Taylor ने हमें उड़ाया था शायद. I think that was my worst game as a Pakistan fan. नहीं वर्स्ट गेम तो उससे भी बड़े हुए हैं यार. आयरलैंड से मारे हुए हैं. नहीं, for me it was that 1 for 4. नहीं हारना तो हो जाता है यार, but like 1 for 4 at that moment I was just. I think फिर उमर अक्मल और सुहेब ने पता नहीं कोई पार्टनरशिप. Umar Akmal played a decent hand, and Maqsood was hanging around the fake Inzi that he is. करते वो अपने आप के साथ ही हैंड कर गया. Here comes the captain Sarfraz Ahmed. Ghazanfar जो है, just a little about Ghazanfar Agha. A couple factoids. He's the only man that I know that's been featured on an Ali Sethi song. Through some Faris Shafi lyrics, and he's also been kind enough to host us for today's game, and he's also asking कि बाबर का 100 इस मैच में है. So yeah, I mean, you know, it all depends on him and Captain Fantastic, who's Khwaja has a lot of stern opinions about. He's got to come. He's got to come. I mean, this is a perfect position for him to. Up to no doubt. And Gopi Mia Kawal is chiming in. Last World Cup was West Indies was straight Zalalat. If I can stand the last World Cup, then we will see. Fair enough. Yeah, that. This is just prodded away outside the off stump. इस वर्ल्ड कप की ये खास बात है कि you have a couple of opportunities to recover. आप 2-3 मैच भी हार जाओ तो you are not out of the tournament. But of course उस पर डिपेंड तो नहीं कर सकते कि भाई ऐसे ही हमने आगे मर के आगे बढ़ना है. ये हमारे लिए winnable game है. Just the unfortunate thing about this World Cup is that it'll just keep getting harder. Like it won't get easier for you. If you were looking at it from a regular team, not a Pakistani mindset, then you want to win 4 games on the trot, and that's it.
so you can relax and 4 तो यार बहुत relax and get to the semifinals. Obviously, that's unlikely, but लेकिन ये वर्ल्ड कप कैलकुलेशंस और नेट रन रेट और हेड टू हेड पे ये लोग Yeah. डिसाइड होंगे. आई कैन सी एवरी टीम बीटिंग ईच अदर. काफी ये सीन yeah, no doubt about it. I think the only outliers I see are Afghanistan, Bangladesh, and Sri Lanka, and I think even they मुझे will तो cause कंफर्म some लग रहा है upsets. अफगानी भी उड़ा देंगे एक दो बिग फिश. हम Yeah. है ना बिग फिश उड़ाने के लिए. Fair enough, yeah. बाकी तो छोड़ो. So 10 overs gone for Pakistan's 2019 World Cup. They're 45 for 3. Thank you for joining us here. We will. We will, and we will collapse. thank you for joining us on Change of Pace Live. We've been doing live commentary for Pakistan cricket. All the start at the PSL 2019, and we're going to be with you through all the 9 games and hopefully a couple more if Pakistan qualify for the semi-finals. On Change of Pace, you can catch us on Twitter or Periscope Live. You can catch us on Twitch. We're also on YouTube, and we keep updating our Instagram as well. This is a half appeal from Brathwaite as it hits Babar high on the pad going down leg side as well. यार it just seems like a good toss to one. मुसलसल सीव मोमेंट और स्विंग मिल रही है उनको यार. टिपिकल ओवरकास्ट इंग्लिश. But it really doesn't mirror the images that we saw against England in that series. It's a very even pitch. यार कल वाला पिच भी हमने देखा था. स्पिन हो रहा था अच्छा खासा. It was a very good one day pitch. I thought South Africa were going to get a lot closer than they did, but they have a very fragile lower middle order, don't they? Their batsmen stop quite early up in the order. यार उनका स्ट्रेटजी और गेम प्लान तो बहुत ही अजीब था. फाफ डू प्लेसी आपके 2 बैट्समैन आउट हो गए. आप हुक मार रहे हो आउट हो रहे हो. फिर क्विंटन डिकॉक सही खेल रहा था सुकून से खेल रहा है. एकदम ही एक हॉइक मारी आउट हो गया. So फिर जेपी भी आउट हो गया. समझ yeah, नहीं it आया was उन्होंने poor क्या किया. all around. But what do you reckon about the about Andre Russell? Do you think he's a full-time bowler, or do you consider him a part-timer? I think he's a I part-time. think he is a pure all-rounder. मतलब लेकिन of course इसकी बैटिंग prowess तो हमने देखी है यार. Outside off, and this is played straight to the man at point. Is dropped. Oh my God, Bobby. That is a huge drop from Hedmeyer at point. यार That could have been the game for Pakistan. 45 for 4 if that catch had gone in. And Jason Holder knows how big that drop was. He looks shell-shocked. It was just straight to the man, and he's so good at that shot usually, Bobby, but this time straight into the hands of Hetmeyer and straight out. just second chance. Just the luck that Pakistan needed this morning. यार समझ नहीं आ रही है लोग क्या करें. और उनके पूरे बेंच को पता है भाई बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया. That's the big one. This time straightens it up. Beautiful bowling from Brathwaite on the pads. It was a hittable ball, बस बाबर ने execute नहीं की shot सही तरह यार. You don't see that very often, do you? Babar missing out outside of off. occasion ना कि आपको थोड़ा आप tight up हो जाते हो. थोड़ा आपकी जो shot हमेशा होती है. Oh, he dropped it. What an effort. Yeah, that's the thing. It's all about those nerves at the World Cup. You just got to settle in and make sure that you treat it as a regular occasion and enjoy the occasion too. लेकिन अब देखो हर बड़े प्लेयर को जब चांस मिलती है, so he makes it count. तो इंशाल्लाह बाबर आजम will make it count for Pakistan. No doubt about it. Jason Holder this time another short ball from Brathwaite. ये मुसलसल इनकी स्ट्रेटजी लग रही है कि भाई इन्होंने पाकिस्तानी बैट्समैन को क्रॉस बैट शॉट्स खिलाने हैं और इनको ऐसे ही आउट करना है. The short ball, I'm surprised how much they're using it because the slower delivery was prevalent in South Africa's innings, South Africa's bowling yesterday to keep England fairly controlled because 310 for this. बहुत अच्छी कैप्टनसी की थी फाफ ने यार. Faf लिमिटेड रिसोर्सेज में बहुत उन्होंने very innovative as well. But मतलब आपके 3 टॉप ऑर्डर 50 सारे मार के. Oh, that's tickled down fine leg and that'll be 4 runs for Sarfraz Ahmed, the captain for Pakistan. And he opens his account for the World Cup, and mind you, he was basically, well, there's no argument about the fact that he was our best batsman in 2015 World Cup when he opened the innings for us. यार तुम कब तक ये नॉस्टैल्जिया पोर्न देखते हो यार मतलब आप लोग 90s की बातें करें तो वो नॉस्टैल्जिया नहीं है. हम 2015 की बातें करें तो नॉस्टैल्जिया. 96 क्वार्टर फाइनल को लोग रो रहे हैं यार. फिर हाँ तो हम ऑफ कोर्स यार वो तो शेल शॉक एक हमारे लिए लॉस थी. मोहाली भी बहुत ही. What's worse for you, the 96 or the 99? Of course 99. Right. So a little about the 99. My dad stopped watching cricket after 99, and then he only got back into it when we forced him into it, like around 2012, 13. बहुत दिल खराब हुआ था. हम इतने अमेजिंग थे उस वर्ल्ड कप में. ऐसे मैच हमने जीते थे कि यार बंदा अब क्या करे. I still remember that scene के overhead camera शोएब अख्तर लेटा हुआ है उधर ग्राउंड पे, his hands over his eyes और बिल्कुल ही obviously रो रहा था वो यार. क्या that was his opportunity to win the World Cup. Do you think he should have played the semi-final at Mohali? Of course यार. Because he says in his book that he was dropped unfairly, right? वो तो यही कहेगा लेकिन इतने बड़े मैच में तो शोएब अख्तर को तो होना ही चाहिए था ना. I mean that wasn't 99 Shoaib Akhtar though. He was a little chubby. He was slower. यार even then उसने he wasn't slow actually. He bowled at 157 that World Cup न्यूजीलैंड के खिलाफ भी कामरान अकमल वो कैच ना छोड़ता तो कहाँ उसकी विकेट टैली होती. True. Anyways. Well, Shoaib Akhtar again. Let's fast forward to the future, further to the present.
जो हमें एक प्रेजेंट दिया मिस्टर शिमरॉन हेटमायर ने. बाबर आजम का कैच छोड़ के जेसन होल्डर ऑफ कोर्स वेरी अपसेट यार, वरना इधर ही मैच गिरफ्त में ले लेता. फिर there was no way back for Pakistan. 50 for 3. The 50s come up for Pakistan at the 11th over. ठीक है यार, लेकिन बस Well, I think it's slow, I think, for modern standards, but यार मॉडर्न स्टैंडर्ड अपनी जगह, लेकिन आप देखो बॉल मूव हो रही है और वो सब. वी गेट टू कॉट अप इन दिस पिच. ये जो 300 350 वाली जो आजकल बातें चल रही हैं यार, हम इंग्लैंड वाली बैटिंग लाइनअप नहीं, हम इंडिया वाली बैटिंग लाइनअप नहीं. हम 320/25 भी रेगुलरली करें, हमारी स्ट्रेंथ हमारी बॉलिंग थी. वी शुड ऑलवेज बी विनिंग दोज गेम्स. हम 250 260 पे मैच जीत जाते हैं यार. ये बात तो है, हमने चैंपियंस ट्रॉफी पूरी इस बुनियाद पे जीती है. Exactly, यार. But the fact remains that does your bowling have enough to defend 280 now? Because it doesn't at the moment. हमारी बॉलिंग में यार, अगर हम सीटी जीत सकते हैं 230 पे. Pulled away from Babar Azam, beautiful shots. It rolls over the practice pitches, and a chubby West Indian cuts it off in the deep at mid wicket. I think that's Nicholas Pooran, who's put on a few pounds, hasn't he? यार आई थिंक इस स्वेटर सूटर पहने हुए इसलिए थोड़ा चबी लग रहा है, लेकिन ये तो Yeah, he's got बड़ा a फिट लड़का था. few layers on him, I think. 52 for 3 after 11.2. Babar Azam 15 Layers off of flab 26. over those abs. It's a beautiful looking Good pull shot from from Babar Azam. He's not that strong on the short ball, लेकिन he improved in South Africa. but he's getting देखना better. पड़ेगा. Exactly. गालियां यार निकालेंगे. Sir Khail is asking us to swear on air. It's हालांकि a मैच bit से पहले premature इसने for मुझे that. full Another pull shot from Babar. ये हुई ना बात, ये होता है फॉल. Short ball this time, and he gets on top of it. Babar Azam keeping the trajectory low, bounces over the practice pitches into a wider mid wicket where there was no fielder for 4. 56 for 3. Pakistan after 11.3 now, and Babar is just setting himself at this World Cup to make sure he owns this tournament. It was just in front of mid wicket, to be honest. Great shot that. अच्छा ये ओशेन खेल रहा है आज यार, ये तो इनका एक्सप्रेस पेसर, और उसको फ्रंट फुट पे पुल मार रहा है भाई बाबर आजम. थोड़ा Babar Azam taking no prisoners. केयरफुल होना चाहिए बॉय, केयरफुल हो. Let's talk about O'Shane's played 9 matches, conceded 413 runs, but he's got 15 wickets, a decent average of 27.5 as इंडिया well. में बहुत इंप्रेसिव था यार, ये अच्छी पेस दिखाई थी इसने. We got O'Shane, age 22, coming in outside off. Babar Azam this time carves it down to third man, where the lazy-looking Andre Russell, who's hurt Pakistan well already, fields away for a single. शॉर्ट बॉल पे रूल है 2 बाउंसेस पर ओवर होता है. Zan Tharar on YouTube, thanks for joining us, Zan. I know Zan from my Yambu days. Good to hear from good to hear from you, man. How many are they gonna ball short balls? Man, it was just supposed to be a one in the over. One in the over, right? 2 पर ओवर होता है. 2 per over, but Andre Russell can bowl 4 apparently. ओए देख के सरफराज, ये जो आप अपनी बैक कट मारते हैं ना थोड़ी ऊंचे पॉइंट के ऊपर से, देख के खेलने चाहिए आपको. Classic Sarfraz shot, no feet यार एक तो movement, इतना just. बड़ा कैच वाला चांस था, लेकिन मिस्टर मुसाद कहेंगे क्लासिक सरफराज. I mean, that is classic Sarfraz, no footwork, dabbing it down to third man. क्लासिक Classic. Asif Ali got dropped. Oh, who got dropped? Babar Azam got dropped at point. पॉइंट पे पॉइंट. Clive is asking us to tweet out the YouTube link, so if Sir Khail can do the honors. Yeah, link on bio. Follow, subscribe. हमारे बायो में सारे लिंक्स हैं. यू कैन जस्ट क्लिक ऑन लिंक ट्री इन एनी Thomas फॉर्मेट, जिस भी 2020 टेस्ट में जिसमें भी आपने सुनना है आप सुन सकते हैं. Thomas ends the over with a short ball outside off, but a good one for Pakistan. Yeah, just a few people that are on the move, that are moving around. Just so you know, if you're listening to us on Twitch, there is a audio only option on the app. So if you want to save on those data packages, or just watch the match and listen to us instead, I think. अगर आपने अपने लॉक स्क्रीन लॉक करके देखना है. Yeah, even though Ian Bishop's on commentary, he's not half bad, is he? But still, if you want audio only, there's an option for that. Gopi Kawal is saying, think about it, Nasir Jamshed, Umar Akmal, Yunus, Rahat Ali was quite good amongst other weak players. I don't know how good Nasir was. को तो 2011 And के बाद ही निकाल देना Yunus चाहिए was था fairly a former shadow of himself in that World Cup as well. So I'm not sure if I agree with you there, Gopi Kawal. But no doubt about Rahat Ali, he was fairly good at that bowler. Has AZ forgotten how Pakistan's bowling attack has gone downhill against CT17? Clive is saying that. should not. Ooh, hits the upper part of Sarfraz's single. bat and takes a quick single. This is यार देखो, अगर हमारी बॉलिंग अंडर परफॉर्म करी है, इसका ये मतलब नहीं कि हमारी बैटिंग को 350 करनी चाहिए. ये तो अननेचुरल आप चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो. और बॉलर्स शुड ऑल बी परफॉर्मिंग मच बेटर यार. तो 5 के 5 आपके फास्ट बॉलर गंद मारे हैं. अब ये सारे कंडीशंस पे तो नहीं हो सकता ना यार. Yeah, that's true.
Gopi Miyakawala saying on form, they're pretty much the same pace attack, just Wahab is the difference. So he's still back in the Pakistani bowlers. This is a dab right next to the pitch, Squeezed. beats short third man, and it'll be just a single for Pakistan. 60 comes up, 60 for 3. छोटे छोटे माइलस्टोन भी सेलिब्रेट करने पड़ते हैं यार, तुम्हें पता है बैटिंग के वक्त. यार बॉबी अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छा खेल रहा है, थोड़ा देख के खेल रहा है. अब उम्मीद है कि बॉय लंबा स्कोर करेगा. आई थिंक कोई स्पिन ऑप्शन इनके पास कोई खास नहीं. एशली नर्स वगैरह ऐसे कोई टेढ़े मेढ़े बादामी इनके ऑफ स्पिनर ही है. यार ये हारिस कर क्या रहा था यार, अभी भी मुझे गुस्सा आ रहा है. Well defended from Sarfraz on the offside, no single. And Hamza Dude is online, and a really early days for this, but a comment from him saying, did Hetmar just drop the World Cup? ऑफ कोर्स मुझे लगता है अभी से ही आप पे तो बाहर होने लगे हैं पाकिस्तान. अब देखो यार अल्लाह खैर करे. पहले हम 250 260 के तो देखें, अभी तो हम 60-70 पे घूम रहे हैं अभी तक. Yeah, Zain is just letting us know that Sarfraz. Zain Malik? No, Zain Malik, nahi, Zain Tharar, who's just letting us know that as Sarfraz was signaling to the umpire when Haris got out about the short ball issue, and he says that a minimum of 300 is required here, especially considering Amir's dip. Considering what? Amir's dip in form. हाँ आमिर डिप यार. आमिर बाकी आमिर के हमें पुरजों का नहीं पता. आमिर डिप की बात हो रही, क्या हो गया यार. गंदे नास्टी माइंड्स. 61 for 3. Miyar Ramzan में भी इस तरह की बातें हो रही हैं. Short ball, but Babar's bat just holding up like Asad Shafiq in that test match. ठीक है, पेरिस्कोप क्रिकेट में अच्छा नहीं है. आपको याद है वो असद शफीक वाला dismissal test match में where he left the bat straight up? Yeah. Yeah. Embarrassing dismissal. I think that has to be one of the worst ways you can get out as a test batsman. बिल्कुल. That and Mohammad Rizwan pulling his first test ball straight into deep mid wicket for a wicket when Pakistan needed him to stick around. I think that was the beginning. भाई का भी तो आपको याद होगा पनेसार के खिलाफ. That was fairly bad as well. Chucked But away to- Inzi is a personal favorite, so I don't Of like course यार, इंजी भाई तो bringing goat. it up. He's the goat. Gopi Miyakawal, I mean, how bad was that team? Rahat was good, but a surprise selection for that World Cup as well. Yeah, that team was awful. यार हमारी सारे स्क्वाड ही obliterate हो गया था. हफीज इंजर्ड, जुनेद इंजर्ड, अजमल बैंड, अफरीदी आउट ऑफ फॉर्म. तो रही क्या गया था तब यार. हम तो बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला ही करके वर्ल्ड कप गए थे. Right, so Gopi Miyakawal, Clive is saying Pakistan should have found a way to include Asif Ali. I think that's a very good point. यार फाउंड अवे क्या, स्ट्रेट अप उसको 11 में होना चाहिए था. हफीज 6 पे क्या कर रहा है. उसने अपने करियर में ही इज ओनली बैटेड एट 5 or 6 मे बी 5 टाइम्स टोटल. तो आप लोगों ने कौन सी साइंस मारी कि सोचा हुआ है कि जी हफीज अब 37-38 ईयर्स ओल्ड होके अब 6 पे आके अच्छा खेलेगा. ये क्या लॉजिक थी. Doesn't make 62 sense. for 3 as... Oh, it's gone, I think. It's a beautiful catch. Carlos Brathwaite picks up Babar Azam. A very uncharacteristic shot from Babar. No feet movement at all. Just slashed at a delivery that was so far wide. And it's gone straight through a diving wicketkeeper. Beautiful catch, though. Pakistan 62 for 4 at 300 mark. It looks like a fantasy right now. गंदी शॉट बाबर आजम. यार आपको लाइफ भी मिली है और उसकी एक्स्ट्रा पेस है. थोड़ा देख के खेलो. आपने 1-2 पुले मार लिए तो आपको क्या जरूरत है इतने अग्रेसिव होने की. जस्ट अ बिट वाइड, जस्ट अ बिट शॉर्ट, बट दैट एक्स्ट्रा पेस एंड अ फ्लाइंग कैच. शाय You have होप to say it was a brilliant catch. अनबिलीवेबल कैच यार. लेकिन अब तो फुल डिजास्टर स्टेशन हो गया पाकिस्तान के लिए. 62 for 4. अब मोहम्मद हफीज़ पे अब पूरी बात रह गई है. उसके पीछे इमाद रह गया और शदाब. Another poor start to the World Cup for Pakistan. It just seemed so typical, so standard of Pakistan to start a World Cup like this. But honestly, I did expect better. Now, here's a question. I think I'm going to bounce this off of Clive, off of what he's just said. Do you, out of this recent World Cup squads of 2019, 2015, 2011, 2007, and all the way down to 2003, who do you think, which team do you think is the best? किसकी? Pakistan. यार पाकिस्तान का Which Pakistan squad from 2011 वाला ठीक था. 2003, 2019, which you think is the best squad? 2003 में भी आसिफ इंजर्ड था, शुएब इंजर्ड था, रज़ाक इंजर्ड था, अफरीदी सस्पेंडेड था. तो वो तो हमारा नहीं, सॉरी 2003 तो हमारे स्टार स्टडेड था. बट उसमें टीम में वही थे, इन फाइटिंग चल रही थी. दे डिडंट वांट वकार एज कैप्टन, दे वांटेड वसीम एज कैप्टन. बट वसीम बिकॉज ऑफ द कयूम रिपोर्ट एंड ऑल दैट उसका सीन ऑफ था. तो थोड़ी मिनी रिवोल्ट उधर चल रही थी. इंजमाम वेट लॉस के चक्करों में था तो आउट ऑफ फॉर्म हो गया. वरना नेम्स के हिसाब से तो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी बट उनमें कोई कोहेजन नहीं थी. 2007 हमारा स्क्वाड ही सारा तहस नहस था. 2011 फिर भी थोड़ा बेहतर था क्योंकि शुएब था, मिसबा था, एंड ऑल दीज गाइज. So I'm going to go out on a limb and say that the best squad out of from
2003 to 2019 is the 2019 squad. यार आर्ग्यूएबली, लेकिन अब 67 2 for 4 हो गया वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, तो बंदा क्या करे अब. मोहम्मद हफीज़ पे अब आप रिलाई करने पड़ेंगे, द ओल्ड रिलायबल. Mohammad Hafiz, another, this cuts a very typical picture for Pakistan. He's back to where we like him, at the crease. He's in for a little bit of his bowling prowess as well. And मलिक फैंस की बद्दुआएं पड़ गई पाकिस्तान को. Yeah, no doubt about it. He's played 208 मैचेस खेले हैं हफीज भाई ने, 6300 रन है उनके पाकिस्तान के लिए, 140 का हाई स्कोर है, and an average of 33, so not bad. And this time Brathwaite follows up with a good full delivery that's defended back from Hafiz. ये टिपिकल इंडकर बॉल थी जिस पे प्लम LBW होकर रिव्यू लेता रहता है, तो that was a good delivery from O'Shane. लगता है स्टडी करके आए हुए हैं सारे प्लान्स यार, लेकिन ये बाबर आजम की शॉट से तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट. Yeah, it's just so uncharacteristic of him. I think the occasion has gotten to him. ओकेजन भी यार तो ओवरकास्ट कंडीशंस है, थोड़ा तो आप देख के खेलो, लेकिन ठीक है अटैकिंग खेलता रहा है वो. शैडो बैटिंग हो रही है, कवर ड्राइव की, और बॉल इतनी बार थी कि पॉइंट तक बॉल नहीं जानी थी. ये मुझे सबसे जहर लगता है काम. आउट होने के बाद आप फिर शैडो प्रैक्टिस करो जो आपने. Outside off, gets on top of it. Hafiz from Hafiz. Beautiful, gets on his toes, jumps up and carves it past point for 4, and that is also classic Hafiz. भाई हफीज साहब प्रॉफ हैं, बंदा क्या करे, player हैं after Right, all. Zen is saying that 2011 on YouTube, Zen is saying that the that's our Hafiz jingle, and Zen is just saying that 2011 World Cup squad was the best ever. Freedy did a good job of captaining that off the pads of Mohammad Hafiz on top of the practice pitches. What a shot, but timing up देखो, just a flick through mid wicket. Yep. And another 4 for the professor. क्या Looks बात in है form, भाई. that 400, no, not the 400 strike rate, but the 300 strike rate. बस भाई बस ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब. हफीज़ का ये है कि अब बाउंड्री हिटर तो वो है. ओशेन का भी हमने ये मसला देखा है कि ही इज़ अ विकेट टेकर, बट लाइंस थोड़ी एरेटिक हैं, तो उसको चौके छिक्के पड़ते रहते So a हैं. lot of 2011 fans of the World Cup squad, because Gopi Mia Kawal is echoing Zan as he's saying that, yeah, this is 2011 for sure, but this one also has the potential, but not playing that way. Clive is quite upset of that we've said 2019. Clive, why is that the case? Why do you not see this squad as a good one? Or are you agreeing with 2019? I never understand what he's trying to say, Clive. Desi Sputnik is saying a better question would be which team's the more comical one. I'm going to go with 2015. That was an absolute nightmare. यार छोड़ो यार ये पुरानी So, यादें. आपका comical, what do you guys reckon in terms of comical? 2007 will probably be up there, but the fact that it was Inzi's last यार World Cup. that we managed to make a 15 for that World Cup itself was a miracle. जो हमारे हाल थे यार. सुहेल खान और कहाँ से लोग कैसे select हो गए. 70 for 4 now. Pakistan Hafiz 8 off 4. Safran 7 off 8. It's outside off, defended straight to the man at cover. It still looks like it's. I mean, there's so much cricket still left to play today. We've only gone down to 14 overs. So if Pakistan can get, these two can bat down to the 30 or the 35th, they're still in a good position. Because the firepower is still at the bottom. यार फायर पावर भी अब कितना ही रह गए. इमाद और शदाब और 2 ही रह गए हैं इसके बाद, तो आई डोंट सी एनीबॉडी एल्स. आज इन्होंने प्योर बैटिंग इन्होंने 6 तक खिलाई, जो मुझे समझ नहीं आई इनकी थिंकिंग क्या थी. लेकिन अगर इस पोजीशन से भी हफीज़ और सरफराज को रेस्क्यू जॉब कर जाए, That'd be good, yeah. And it's a good tester. I always say, and the likes of India and England sometimes don't get the luxury of this, is that their batting order doesn't get tested in these big tournaments because the top 3 gets about 80% of the runs. टेक्निकली देखा जाए तो 11 तक की बैटिंग है. वहाब भी बैटिंग कर लेता है, हसन भी कर लेता है, तो Brathwaite to continue again, this time just defended out to a short gully. That'll be a no run for Sarfraz. Our statsman today, Ahmed Jr., who's been promoted from intern to statsman for the World Cup, sending in freelance statsman with emphasis on free. He's just dropped a reassuring statistic for the Pakistan fans. Sarfraz Ahmed in England and Wales, 15 matches, 11 innings, a highest of 105, but an average of 70.5. इसने 2 तो 90s, एक तो इसने 90 नॉट आउट मुझे याद है. इसने 90 मारा था 2016 में, 100 भी मारा था. He enjoys batting in England. इसने वो सेमीफाइनल में श्रीलंका के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो 60 नॉट आउट किए थे, और 90 कुछ अभी इंग्लैंड सीरीज़ में भी मारा था. तो ही इज़ परफॉर्म्ड इन इंग्लैंड सरप्राइजिंगली. बाकी जगहों में पता नहीं इसको क्या हो जाता है, लेकिन इंग्लैंड में ही इज़ डन वेल.
pulled away through mid wicket for only one. अब देखते हैं यार, partnership is very crucial at this stage. अगर पाकिस्तान ने कोई भी defendable score post करना है 70 for 4 से, अगर इस वक्त तो मुझे लगता है 245 जो करंट रन रेट पे मिल रहा है, ये भी मिल जाए तो बहुत बड़ा एक बोनस होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इसके बाद सिर्फ इमाद और शादाब ही रह गए बैटिंग में, जो रिकग्नाइज्ड आप काइंड ऑफ कह सकते हैं कि बैटिंग है. सो इट्स गोना बी अ वेरी अपहिल टास्क to do something from this position. Need a master class from Sarfraz or Hafiz somewhere here. अब देखो यार, इतनी needless wickets की, I don't think you can say even one of the, perhaps after Haris Sohail, that was the only good ball to get a wicket. बाकी सब needlessly out हुए हैं. बाबर की तो बहुत ही बुरी shot थी. Even Imam got tangled up with the ball. Shouldn't have happened. और फ़खर भी अपनी वही पुल जो उसको सर पे या हेलमेट पे हमेशा लगती रहती है, यूजुअली टॉप एज चौका हो जाता है या इधर उधर बॉल लैंड हो जाती है, बट दिस टाइम इट नेस्टल्ड इनटू द स्टंप्स. Oh, beautiful bouncer outside off, left alone. You have to say, चलो एक शॉर्ट बॉलिंग का प्लान तो होता है, काफ़ी टीम करती है कि भाई शॉर्ट बॉलिंग करानी है, बिल्कुल, और बट उसको एक्सिक्यूट करना इतना आसान नहीं होता जितना लगता है. और वेस्ट इंडीज़ की आज शॉर्ट बॉल्स, they've been on point. The length and the line and even the pace, it's good. It's been really good, and I know that Pakistan haven't come to cope with it, and some of them were rather ridiculous, like Fakhr and Haris. But it's been a really well executed plan from the Windies. You have to give credit to them. Good length delivery this time, just defended away. That'll end the over. That one delivery left. Speaking of commentators, अभी Mel Jones और Michael Holding आए हुए हैं TV पे. They're both great commentators, I think. यार मुझे मेल तो बिल्कुल नहीं पसंद. माइकल होल्डिंग तो चलो एक लेजेंड है. मेल आंटी नहीं, वो ईसा गुहा जो है, Issa Guha is very good too. Yeah. Have you read Michael Holding's book? नहीं, क्या बता रहा था? अच्छी बुक है. और वो यार इतने शॉर्ट बॉल यार, ये क्या सीन है यार? That's wide. That's got to be given wide. Another short ball gets a. He's a very compulsive hooker. Okay, well, तुम कहना क्या चाह रहे हो यार? I didn't say. I'm just repeating what you said. आपने वैसे हफीज़ की ये जो जट चौधरी वाली मूछें हैं आपने देखी होंगी. What do you think about those? मुझे लगता है हमें भी बना लेनी चाहिए ऐसी. Probably just internet just died. It's fine. सब बंद है अभी. Okay, last 6 games between the West Indies and Pakistan. What are they looking like? Pakistan are well on top because of that. Pakistan won 5, but the West Indies have won 1. But the वो भी बाबर आजम के जोर पे जो उन पे 100 मारता है. But वैसे यार वेस्ट इंडीज आपको पता है, they underperform in bilateral series. ICC में वो आते हैं, वो कहाँ से फिर उनके सारे ऑल स्टार्स आ जाते हैं ना. वो एक उनके NBA वाला सीन है पूरा. स्पेस जैम वाली टीम बन जाती है इनकी, मॉन स्टार्स वाली. वैसे स्पेस जैम 2 भी सुना है आ रही है, लेब्रॉन जेम्स बना रहे हैं. अब देखते हैं क्या होता है. James, Gopi Iqbal, Afridi was a damn good bowler in 2011 plus. Our Bhatta boys were damn good spin. Arsalan was saying even then, Afridi, Abdur Rahman and Gul were our best bowlers then. Batting भी average ही थी. यार अगर हम 11 वो मोहाली में जीत जाते ना, हमने पक्का वो वर्ल्ड कप ले जाना था यार. Oh yeah, for sure. You know, let's talk about the NBA finals as well. A little bit of यार का जबरदस्त बड़े we the North Raptors. Drake ने फिर से एक और basketball. अच्छा यार, ड्रेक इतना बड़ा चूसर है यार. अच्छा नहीं, मुझे ये बताएं कि ड्रेक की ट्रांसफॉर्मेशन टू अ बास्केटबॉल प्लेयर, every game he watches he dresses more like a basketball player. मतलब on the day अगली टोरंटो मैच में तो full kit जॉन टेरी बन के आया. Full kit wanker. It is. It's like he was like wearing a jersey and everything. अच्छा, आपने उसकी हरकत देखी? स्टेफ करी की बाप की जर्सी पहन के आया था वो. नहीं तो ठीक है ना यार, उसका बाप वो ऑनररी था ना, वो उसको किया था, ट्रोल भी कर रहा था, इसमें तो कोई शक नहीं है. Who? Okay. He's selling it on eBay. So if anybody wants a piece of lint from Steph Curry's beautiful hair, you can. Drake is selling it on eBay under the username Draymond. Shouldn't wear 23. Basketball joke. West Indies versus Pakistan from the 1975 World Cup, where इधर भी हम हार गए यार. Windies got 267 and Pakistan 260. यार वैसे हमारा वर्ल्ड कप्स में तो विंडीज के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड नहीं है. 92 में 10 विकेटों से हम हारे. बस हम 2011 में इनसे जीते थे वो क्वार्टर फाइनल, वो जो हमने ब्लो अवे कर दिया था बिल्कुल ही. अफरीदी भी, इसमें अफरीदी भी शामिल था. वो तो चलो बांग्लादेश ढाका में तो हमने जीतना ही था उनसे, सारी पिच विच सपोर्ट भी हमारे लिए थी. बट लेट्स सी आज क्या होता है.
72 for 4 after 15 overs यार. शाहजमान जो हमारे करीबी दोस्त और काफ़ी पैशनेट इमाम उल हक हेटर भी हैं, वो कह रहे हैं कि we're not winning this in my opinion for sure because game बिल्कुल बिक गई है. Umpires call are seriously worrying at the moment. If umpires are not going to warn them, they'll continue to do so with just one wide or at least telling them 2 for the over. He has a good point, you know, we've been making it earlier as well. यार सरफराज उधर खड़ा है, उसको शोर करना चाहिए यार. यार वैसे आपको पता है सरफराज quite vocal about these things. Exactly, he should यार. Usually तो वो he's not like जब Pakistani. स्टंप माइक पे जब पकड़ा जाता है तब तो उस पे बैन लग जाते हैं. तो अब तुम क्यों वर्ल्ड कप में आके फिक्र कर रहे हो? जोर जोर से चिल्ला के बोलो. Zen is asking on YouTube. What's your final prediction for the score? Before we give out our final prediction, जो भाई हमें सुन रहे हैं वो भी बता दें. What's your final score at the end of the 50? If we make it to the 50 overs, because we have to play all of them. अब देखो अभी ओवरकास्ट है, जब उनकी बैटिंग आएगी तो ऐसे सनलाइट अब फुल उभर के आ रही होगी जैसे पता नहीं कहाँ लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में मैच हो रहा है. So what do you reckon, Khwaja? What's your number? यार इस वक्त तो कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान के साथ, बट आई एम होपिंग कि हम 250 तक तो कहीं से घसीट लें यार मैच. बट स्टिल नीड अ मेगा पार्टनरशिप. इनको 20-26 ओवर इनको 20-22 ओवर साथ खड़ा होना पड़ेगा, फिर ही कोई सीन बनेगा मैच का. आगा साहब कह रहे हैं 220 रन करेंगे. 220 वही फाइटिंग मैच जो हमारी यूजुअली होते हैं. वैसे आपको याद होगा CT 13 में जो मैच हुआ था, हम 180 जब मिसबा ने 97 किए थे नॉट आउट. अच्छा, CT 13 is one of those tournaments के मतलब it doesn't even register in my mind. I don't even remember us. But that was Misbah's best one-day innings यार, जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ उसने मारे थे. टोटल कोलैप्स How वाला far did सीन we था get हमारा. that in that? हम ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए. लेकिन वो मैच कुछ 170 ऑड हमने किए थे, लेकिन वहाब ने वो मैच फंसा दिया था. एंड में नारायण ने विनिंग रन्स आई बिलीव मारे थे. इट वाज अ क्लोज गेम. Zen is saying that Sarfraz actually did talk to the umpire. शुक्र है After the Haris अब wicket. पता नहीं सुनते हैं यानी. After the Haris dismissal, that means when he came on to the pavilion, तब तो वो था ही नहीं. O'Shane भी 143 मार रहा है भाई. 9 off 11. Bush did 9-11 by the way. Hafeez batting 9 runs off 11. And Sarfraz 8 off 11. Pakistan 72 for 4 after 15.3. The runs have slightly dried up after a flurry of boundaries from Hafeez a couple overs ago. Hafeez का यही स्टाइल है ना. That's why I'm saying he's not a number 6. Number 6 वो just strike rotate. That's a good point. Yeah. Score predictor 279. Honestly, at this point, I'll take that. I'll take that right now. Down the leg side. I'll take 179 या 279 तो बहुत दूर. 179 तो हो जाएंगे यार, ऐसी बात नहीं है. इसके बाद ये आएंगे आपके इमाद वसीम एंड शरफ खान. फिर हमारे बॉलर रह गए हसन आमिर और वहाब वैसे हमने देखा वर्ल्ड कप में कुछ ना कुछ स्कोर कर जाता है. आपको याद होगा पिछली वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे को उसने शायद एक क्विक फायर 50 मारी थी, वरना वो मैच भी हमारे गले पड़ गया था अनफॉर्चुनेटली. 220-30 वाला सीन हो गया था. Oh, this gotta be a wide. This has gotta be a wide. This is outside off. Well outside off. Finally. Oh, this is ridiculous. This has not been given. No, it's not been given wide. Oh, नहीं दिया. मैंने उधर स्क्रीन में घुस के चढ़ने मारनी थी इनको. यार ये कर क्या रहे हैं? हमारे बॉयज भी क्राउड में डाउन हो गए, मीरपुर के बेचारे सारे. यार दिस इज शेमफुल, शर्मफुल यार. ये तो उमर अकमल उसके कंधों पे भी बैठ जाता है तब भी वाइड थी यार. इतना ऊंचे बॉल थी. Umar Akmal doesn't have a lot of height on him, does he? He's a pretty short man. यार ये अंपायर अंधे हैं ख्वाजा. ये है फिल्मिस्तान. आई एग्री विद यू फिल्मिस्तान. ये कौन से चैनल है? अपना लिंक भेजो, शायद कोई इंटरेस्टिंग मैचेस भी लगेंगे. इस बार हीट स्ट्रोक से ज़्यादा लोग पाकिस्तान टीम की वजह से मरेंगे. Wow. That's dark humor at its best, folks. Full delivery this time for a change from Thomas. It's misfielded. दो तो करो यार. दो हो जाएंगे यार, क्या हो गया? Misfielded by Carlos Brathwaite at a short long off position. But good recognition of change in length. उसने सीधा ही जो बॉल पहले सर के ऊपर से की सीधा उसने मुंह में दिया. and Hafiz wasn't camping on the back foot. Good punch down the ground. थोड़ा अनलकी था कि चौका नहीं मिला, लेकिन चलो. Sarfraz 230. Sarkhail saying 261. Zen is asking for 250 plus, but not sure if we'll get there. बहुत यार, बहुत ही optimistic fan है यार. आगा 220. आगा का तो हमने पहले बताया था ना. आगा ने उसने मैच देखे ना, experienced cricket watcher, उसको पता पाकिस्तान यही. Slow delivery this time from Thomas, but it's a low full toss. Should have been hit away to be honest, but Hafiz just यार ये defends it full back. toss बॉलें रोक रहे हैं बार-बार, समझ से बाहर है. लोग कर क्या रहे हैं? पॉजिटिव क्रिकेट खेलना ना. पॉजिटिव वर्ल्ड कप जब शुरू होता है हाँ तो हर वक्त ये होता है कि there's always a new series of advertisements that are basically जिस तरह वेस्ट इंडीज शॉर्ट बॉलिंग कर रहा है उस तरह हमें एड्स जो है ना शॉर्ट बॉल करा के हर ओवर हर विकेट के दरमियान दिखाए जाते हैं. सही बात है. किसी भी चैनल पे. बट थोड़े बहुत एड्स होते हैं जो अच्छे भी होते हैं, जो दिल को छू जाते हैं. So here's a question out to you Khwaja and to the rest of the gang and to all the listeners.
What's your favorite cricket World Cup ad? Like जो World Cup के दौरान air हुआ हो. ये कौन सा ऐड था? हाँ एक ad सुना था. सुना लग रहा है. हाँ Pepsi का ad था. यार वैसे वर्ल्ड कप ऐड. Sarkil, can you link that on the Twitch chat and on Twitter? And can you send that question out on Twitter as well? Okay, bhai, what is your favorite World Cup ad? Cricket ad basically. Cricket ad. ये Yes. खैरी during तो the नहीं है World यार, Cup. वही लग रहा है. Khairi ka tabra hoga down the leg side, and I think he's gotten a tickle on that, but he's gonna get nothing from the umpire. Quickly. So Yeah, Ross लेकिन- has this bad habit of getting caught down the leg side. By the way, he's really got to work on that because it's a ridiculous form of dismissal for a good Because the batsman. problem is he just अपने वो झुकता है ना, वो अपने front foot His वगैरह, weight is हाँ. his weight's always thrusted He forward. doesn't really move his feet, he just crouches. So Exactly, that's why yeah. he gets caught in It's a very Karachi-esque style in terms of gully cricket वगैरह, short pitches, छोटे जगहों में अगर cricket होती रिव्यू है. ले लिया भाई वेस्ट इंडीज ने. West Indies reviewed it. Jason Holder, the captain. एस रवि, एस ऑफ कोर्स सांप रवि इंडियन वैसे आपने एस रवि का एक बड़ी जबरदस्त इमिटेशन की थी जब वो DRS पे थे. वो एक्चुअली धर्मसेना की धर्मसेना थी, की लेकिन थी, चलो सब चलता है. Original decision is not out, but I think Oh, that's just यार. off his thigh pad. Thigh pad. आई होप कि पिट्ठी विट्ठी पे ही लगी हो इसके यार, बैट पे ना लगी हो. Oh, I think that's out. आई थिंक he's missed it. It's his pocket and I all don't know. that. I don't know. ओए 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 यार. It has flicked his glove and Sarfraz is out on ultra edge. Jason Holder, captain to captain Sarfraz साहब, यार ये कोई तरीका है आउट होने का यार. Another disastrous wicket for Pakistan. 75 for 5 16वें ओवर में यार. कोई भी हमारा बैट्समैन आज ना प्रॉपर तरीके से आउट नहीं हुआ. ये आप कहें यार बॉलर ने नहीं वाकई देखिए कमाल किया. फखर और अगर हारिस आउट हुए शॉर्ट बॉल पे तो that was a good plan, but you have to counteract. ये सरफराज की विकेट तो ridiculous है यार. डाउन द लेग साइड कोई आउट होता है अच्छा बैट्समैन, and he's been doing this for so often. मतलब इसकी ये बुरी आदत है. Oh my god, it's another dismal start for Pakistan to another World Cup campaign. 75 for 5. यार ये अगले 8 मैच हम वो किस तरह सारी गुजारेंगे? कहानियां थी ना कि यार ये मैच हारे हैं, कोई मसले नहीं, वर्ल्ड कप आने दो, वर्ल्ड कप में ठीक हो जाएंगे. ये पता नहीं कौन से हम डिलूजनल साइंस में हम बैठे हुए थे, लेकिन अब ये भी एक रियलिटी चेक मिल गया है हमें कि जी वर्ल्ड कप में कोई सफ़र नहीं आसान. अब देखो इमाद वसीम है, थोड़ी हमने देखा इंग्लैंड में थोड़ी एक कैमियोस खेल जाता है, लेकिन 50 ओवर वाले कैमियो तो यार बहुत टफ लग रहा है. Right, we'll get back to the advertisements. Just keep it slightly light because there's still a lot of cricket to go, and we're gonna have to bowl on the same track. So maybe there's something here that we don't know about. Although maybe our stats and weatherman can have a look. कि आज शाम की रेन forecast. डांस शुरू कर दो, रेन डांस. आज शाम की forecast क्या है Trent Bridge पे, so we can see. So we can have a look at what it will be. And if it still seems in steps Ronaldo, number 7 for Pakistan cricket. Imad Wasim, Ahmed Hassan, who's not with us today for reasons unknown, is saying that he's the greatest Wasim to play cricket for Pakistan. यार So- अहमद हसन तो ब्लास्फेमी पे हमेशा उतर आता है हर 2 मिनट बाद. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. 75 for 5. He's a lot of shape on the ball as well today. From the West Indies, short ball just defended away to the offside from Imad to get going. Hafiz, I mean, you know, Imad, he's not known for his long stays at the crease, but he's got a shot or खेल two तो in him. सकता है यार, exactly. इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि खेल सकते हैं. यार ये क्या तरीका है आउट होने का. एक तो ये रिप्लेस दिखा के और जलाई जाते हैं. That it is Batman, take the review. That's a great review from the captain himself, by the way. And this was one of the winnable games कि पाकिस्तान ने टारगेट किया होगा यार ये मैच हम जीत सकते थे, और बिल्कुल ही अब गले पड़ गई है They बात. defended away onto the leg side for a single. The commentary on Twitter says that this match is not going to last 100 overs. Pakistan are a rabble. यार और अगला मैच हमारे स्ट्रॉन्ग फेवरेट्स इंग्लैंड के साथ है, उधर भी कोई सीन नहीं है. श्रीलंका से शायद जीतें. कैच कल बेन स्टोक्स का कैच यार, फ्रीक है यार वो बंदा. अब देखो इंग्लैंड यूजली हर टीम में एक बड़ा प्लेयर होता है जो इंस्पिरेशनल प्लेयर होता है हमारे यार, कि कभी जैसे हमारे लिए एक हसन अली है, या ऑस्ट्रेलिया के लिए वो है कि क्या नाम है मिचेल स्टार, मैक्सवेल है जो गेम चेंजर. इंग्लैंड के पास 2 हैं यार, एक बटलर भी है और स्टोक्स भी है. Good delivery again from Holder, angling into the right-hander, just defended back to point.
No run, 76 for 5 are Pakistan. Let's take a look at that ultra edge. Such a faint little tickle for Sarfraz. यार I honestly don't trust ultra edge technology. No, but he should have done better इसी वक्त regardless. अगर वो पाद मार दे और उधर निकला है स्पाइक निकला है फिर क्या होगा उसका? कभी भी गैस कुछ भी हो सकता है, आपको पता है वैसे भी रमज़ान में आपके मेटाबॉलिज्म ऊपर नीचे हुई होती है. अब पकोड़े खाए हुए हैं उसने. Right, another stat attack from तुमने मेरा क्वेश्चन डॉज ही कर दिया. क्यों तुम्हें रोज़ा नहीं लग रहा क्या? down the leg side again. This time played away from Hafiz and finally will collect for a single. What was your question, AZ? Sorry. छोड़ो यार, तुम अपने स्टैट्स सुनाओ. छोड़ो. अच्छा यार, अपने नाराज हो गए. बड़ी क्लासिक 92 किट पहनी हुई अंकल ने. That really is. I like the standardized World Cup kits, by the way. I think it's a good idea. Maybe we can bring it back, but obviously with the game being far more commercialized it's a different scenario. इंडिया का नाइकी है वो तो मर जाएगा कभी कोई अपने चेंज करने से पहले. Yeah. Look at that left-hand boundary for in Trent Bridge. It's almost like a hypotenuse for the ground. It's so short you could just hit it over cover for 6. But that's not a easy shot to execute. A really good job from the broadcasters though to add this. चलो. It's gone! Another wicket for Pakistan. Ahmad Wasim had no idea what he was doing there. You are getting bullied by the West Indies medium pacers, yaar. He tried to pull that away, hit the glove, and it just lobbed up in the air to first slip, and that'll be another wicket. Pakistan are 77 for 6. My heart is falling too. I'm in love with your body. This might be a long month and a half, folks. यार मीडियम पेसर्स है 128 130 है ब्रेथ वेट और ये और वो आपको बाउंसर करा के आउट कर रहे हैं. Look at that, he was trying to play that onto the leg side. He had no idea where that was going. Just an easy catch to first slip. Jason Holder's second of the match. He is pumped. The Windies are pumped, and Pakistan find themselves in a very similar situation as they were in 2015. Hey. Maybe Ahmed, can you pull out the fall wickets from the 2015 game and let us know, see how it compares? 1 for 4 मुझे याद है जेरोम टेलर बार-बार हमें आउट कर रहा था उस मैच में. अब बंदा क्या बोले यार. हमने इतने शौक से इतना महंगा स्टूडियो हमने हायर किया था वर्ल्ड कप कवर करने के लिए और ये भूतनी के यार ये हालत कर रहे हैं हमारी यार. A little about Hafiz in England though. He's played 24 matches. He's got a highest of 69 but an average of just 28. 69. Yeah, I mean that छोटी-छोटी खुशियों वाला हाल हुआ है हमारा अभी. और वो भी 2010 के वो जो जिसने कमबैक टूर में इसने कुछ स्कोर किए थे शुरू में. इसने कैमरन एक्मल हैं तब भी इन्होंने 100 नहीं किए. वी विल तो हमारे गले पड़ गया है भाई हैशटैग अभी से डिलीट कर दो. Defended this time from Hafiz, who's the only one who's been able to control his shots on the short ball today for Pakistan. But again, it's another glaring weakness in the batting order. In steps Shadab Khan at 8. शदाब भी केपेबल बैट्समैन है. हमने देखा है यार कि इन द पास्ट ही हैज सम ODI 50s टू हिज नेम और इसका टेक्निक तो इतना एटलीस्ट है कि यार कि एक प्रॉपर बैट्समैन गिना जाए. बट आज स्टार बॉय वाला काम ही करना पड़ेगा. एक 50 तो हमारे हफीज़ के साथ खड़े हुए हैं. Shadab's got an average of 30 in the one days and a strike rate of 65. A highest of just 54. He'll do well to get to that today. Look at that. Ahmad Wasim was trying to play that away to the leg side, and it ended up on the offside to first slip. He has no idea what he was doing. Let's have a look at how we did against the Windies in 2015. After do we really have to do that? Yeah, we do. It's just. Yeah. Do we really? We were 25 for 5. 1 for 4 थे यार वो तो कोई भी नहीं भूल सकता. Oh, it's another appeal. It's another wicket. edge लगा है यार. Shadab Khan, first ball. It is a horrendous start for his World Cup. He's not reviewing this. He's walking off. No bat involved. Pakistan are 78 for 7. यार थोड़ी फट रही है यार. पूरा खोल के फट के हाथ में आ गया यार. ये तो मुझे लगता है इफ्तारी तक नहीं है मैच जाना यार. रिव्यू Oh, that's high. पे भी यार हाइट पे भी यार. Well, you have to review that. क्या मतलब यार हाइट इतना पहले बोल चुका है. It's a team. अकल से पैदल है टीम यार. ये समझ से बाहर है. अभी भी तुम ग्राउंड में खड़े थे 15 सेकंड तो बहुत टाइम होता है यार. अब कर दे रिव्यू अभी अब नहीं हो सकता यार.
अब आपको याद होगा हसन अली ने एक स्ट्रीकी 50 मारी थी. Oh, हमें come 200 on, तक- Khwaja. Are you 200 तक you're लेके gonna गया pull था. out these like 200 तक लेके गया था South outliers of Africa के innings खिलाफ यार. to justify this batting performance? 72 for 7. Obviously we can't justify यार, लेकिन Khwaja, अब are you बंदा क्या gonna करे? pull out these like मसला ये कि नेट रन रेट के भी धरचियाँ उड़ जाएंगी अच्छी खासी. Gopi Mia Kowal is the optimist amongst us. ओ यार ये क्या इन्होंने गंद किया. अब ऊपर से अब बंदा इतनी हमने बातें बनाई हुई थी इंडिया को. अब अच्छा ये है फिल्मिस्तान जो है वो शोएब नियाजी हैं, आपको हाई कह रहे हैं. अच्छा अच्छा यार ये अंपायर अंधे हैं. अंपायर भी अंधे और बैट्समैन भी अंधे हैं खैर से. We are bunnies of the West Indies in ICC events. Shoaib is saying, and I think he's right to say so because 2015 बनीस तो नहीं कह सकते, लेकिन हम आजकल हार तो रहे हैं उनसे वर्ल्ड कप्स में, नो डाउट. बल्कि टूर्नामेंट्स में उनसे हार रहे हैं हम. yeah, Rehan who manages the Islamabad United team, just tweeted out that we haven't made it past 175 in the past few ICC events against the West Indies. ये देखते हैं यार ये क्या सीन हुआ है. आई थिंक इट लुक्स आउट यार. Yeah, that would have been out. Umpires So I guess he did okay not to. I mean, he wouldn't have lost the review, right? Umpires call you don't lose the review anyway. So. हाँ ये भी अगर आपके पास एक टोटका है तो फिर आप क्यों नहीं यूज़ करोगे यार. डेविल में क्राई सीन हो गया हमारे साथ यार. Oh, this is another weird look shot. Hassan Ali had no idea where that was going, and he played that shot without looking. Yeah, Emma's just pointed out that we might do well to last a whole T20 innings here. वो भी बहुत मुश्किल लग रहा है इस वक्त तो. By the way, 9 टीमें अगर 10 टीमें अगर आपकी सारी अच्छी हैं तो you know the fourth position will definitely net run rate will be मैं in वही the कह रहा हूँ contention हेड टू as हेड well. नेट रन रेट पे बात जानी है, लेकिन हम तो इस वक्त टॉप 10 में के हमारी 12वीं पोजीशन आ रही Is है. it net run rate or is it head to head? Maybe Statsman can have a look at that. आई थिंक नेट रन रेट है, फिर उसके बाद शायद हेड टू हेड देखते हो. This is played away down to short fine leg for a single. I don't know how Ramiz does यार this वी वर professionally. फ्लाइंग एट हमारा क्या स्कोर था 60 for 2 था 80 for 7 हो गए हम. समझ से बाहर है. It's just I had a lot like I had more expectations from this batting lineup. I thought that was going to be our forte this innings. वही है ना यार. Here's a theory for you, Khwaja. Maybe the England series is backfired because obviously those pitches are created by the ECB, and they support यार लेकिन flat tracks. इंग्लैंड पे क्यों नहीं बैकफायर हुआ है. उन्होंने 310 मारे कल. England are a superior team. There's नहीं no मसला ये कि ओवरकास्ट कंडीशंस है ये वो मिल गई, लेकिन आप सब गंदे आउट हुए हो यार. शॉर्ट बॉल आप तैयार ही नहीं थी खेलने के लिए. आप सारी शॉर्ट बॉल पे आउट हुए. कौन अच्छी बॉल पे आउट हुआ है? आई डोंट रिमेंबर एनीबॉडी गेटिंग आउट टू अ जेम ओवर. चलो हम कहें जी जैफर पड़ गया. Oh, this is a bit of a tickle down the leg side. It's just gonna वो bobble away. मुसलसल आपको सिर्फ बैक फुट खिला रहे हैं और लेग पे खिला रहे हैं. शुएब भाई स्पीचलेस हो गए हैं 10 साल बाद. वरना तो मुझे यार दलेर हो यार, दलेरी के साथ उतरो ग्राउंड में यार, दलेर हो, चपेड़े मार मार के उनको मारो. ये तो उनके इथोस होती है. You know, इमरान खान के साथ होता ना, अभी उसके सर पे चढ़ के इतने चढ़ने में आ रहा होता हूँ. my- इतना बड़ा प्लेयर होता मैं. my favorite genre of Pakistani cricket critique हाँ. is ex-players who never really achieved anything. एग्जैक्टली जैसे that ये come रमीज back- राजा और ये that come सिकंदर back and बख्त talk shit. और ये पता नहीं तनवीर अहमद कहता है वो 40 लाख उसको क्यों दे रहे हो, हमको पैसे दे दो, हम डोमेस्टिक ठीक कर देंगे. यार ये लोग क्या. ठीक है. Oh, beautiful delivery. It's not just the short balling that's been good from the West Indies today. They've been on point with their line and length outside of off stump as well. And the Hassan Ali can really take a page out of this book from the West Indies. 81 for 7 as Hassan just misses a quick one outside of यार off ये stump बैक from ऑफ द Jason लेंथ Holder. दिस वाज टेलर मेड फॉर शाहीन शाह. अब देखो क्या यार करें यहाँ पे. मसला ये कि गेल ने अब आके ना ये 10 ओवर में मैच खत्म कर देना है, तो फिर हम कह भी नहीं सकते यार कंडीशंस मुश्किल थी. Achha, so is this going to be a Champions Trophy like start where we're going to drop a couple players? Oh, in the air, this should be taken as well. It will be 81 for 8. This is absolutely, it's unbelievable. It is unbelievable from Pakistan. I mean, this is worse than a nightmare. I thought we were going to struggle to यार win अब today, but शुक्र है this इसके is बाद मिकी और गूफी और इन लोगों के लिए कोई नहीं कहेगा कि इनको इस कोचिंग सेटअप को रखो. इंजमाम को तो वैसे ही खुद अपना जी रेजिग्नेशन चुपचाप टेंडर कर देना चाहिए. इतना बड़ा काउंटर स्ट्राइक हो गया हमारी बैटिंग पे, तुम वो नहीं देख रहे. सीटीज में सीटीज ही मारे गए हैं. शॉकिंग बैटिंग है यार. अब बंदा, लेकिन हसन अली को भी बंदा क्या ब्लेम करे यार इस सिचुएशन में. वो क्या करेगा. You know, I'll just play out to 50 at least.
यार इनमें ये काबिलियत होती तो फिर हम अभी पाकिस्तान टीम थोड़ी होते, हम तो वर्ल्ड चैंपियन होते। वाकई यार उसने कोई पीर साहब की जगह कोई शराब पड़ा होगा, कोई काला जादू किया होगा इन पे। ओह गॉड, टाइम क्या हुआ है यार? हमारा लोकल टाइम क्या है? हमारे इधर तो 3 भी नहीं बजे होंगे अभी तक। चलो 3 बजे, यानी हमारा इफ्तार भी अभी 4 घंटे दूर है, तो आप सोचो यार क्या मैंने है। वैसे पता है, मैंने आज इफ्तार पे जाना था, मैंने कैंसिल किया है, तो मैं सोच अच्छा। रहा हूँ चले जाऊँ क्योंकि वैसे ही मैच खत्म हो जाएगा। नहीं यार अभी ये 200 की पार्टनरशिप लगने वाली, सब्र कर अच्छा लो जी। यार, क्या हो गया? अच्छा। सफ़र नहीं आसान, सो यू हैव टू सफ़र विद अस। ख्वाजा आपके लिए एक कमेंट आया, जी पहला मैच है लाहौर कलंदर्स को ट्रिब्यूट तो बनता है। चलो जी, इधर भी हम ही जलील हो रहे हैं कि किसने कहा था ऑल पाकिस्तान लाहौर कलंदर टीम असेंबल करो आप। मज़े की बात है कि हमारे कलंदर ने स्कोर किए हैं, हफीज़ और और फ़खर जमान। अच्छा, हफीज़ भाई ने कहना है मैं 2023 में भी तैयार हूँ अब। वो तो एवर रेडी हैं यार। कोई अभी भाईजान अभी तक फॉर्मली अब्दुल रज़ाक और यूसुफ भी रिटायर नहीं हुए। रज़ाक हो गया है, रज़ाक भी नहीं हुआ फॉर्मली अभी तक, इनमें से कोई भी रिटायर नहीं हुआ, कभी भी आ सकते हैं। मैंने कहा अब रज़ाक और यूसुफ अभी तक रिटायर नहीं हुए, ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया। दे जस्ट स्टॉप प्लेइंग फॉर नो रीज़न। यार आई थिंक हमने हर वेस्ट इंडीज़ पेसर को अब एक विकेट दे दी है शायद, सबको ही हमने बांटी है। और उन्होंने भी सिर्फ 5 पेसर खिलाए, उन्होंने कहा हमें स्पिनर की ज़रूरत ही नहीं है, मारो इनको दबा के। वाह Good delivery again from Holder. Holder's been the pick of the bowlers for the Windies, hasn't he? यार ही हैज़ बीन ऑन अ टेयर फॉर द पास्ट ईयर एंड हाफ, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट। आफ्टर ही टुक दैट 5 फॉर अगेंस्ट अस इन शारजा, इसकी एवरेज कोई मिड 20s में चल रही है बॉलिंग में, और बैटिंग में भी इसने 100s मारे हैं इंग्लैंड को और इन सबको। बहुत अच्छा वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर बन गया वो। So if you're Mohammad Hafiz right ये now, देखो यार, हाफ वे डाउन द पिच और शॉर्ट ऑफ लेंथ, ये क्या है यार? आप क्या बनीज की तरह आउट 80% of the deliveries, actually 86% of the deliveries. या तो आप इन बॉलों को छोड़ दो। Full delivery this time, upish, ओए। but there's no fielder there, so it'll go down. और to ये वो square कह रही leg. जी 300 वाला पिच है और 350 वाला पिच और 400 वाला ग्राउंड है ट्रेंट ब्रिज। तस्नीम ने कहा था हमें। नहीं है वो तो हमने एविडेंस भी देखा, हमने भी तो 375 ऑलमोस्ट चेस्ट कर लिए, तो चेस्ट कह रहा हूँ। एक तो वोकेबुलरी ख़त्म हो गई है इनको गालियाँ देने के चक्करों में। यार honestly तो अब तो गालियाँ भी नहीं बनती, अब तो बस चाहते हैं कि बस साइलेंस, चुप हो जाओ। हाँ RIP हो गए हम। Yeah, I mean if you're still interested in the sport of cricket, हमने क्रिकेट इन्फो पे ग्रुप बनाया हुआ है क्रिकेट पिक्स का वर्ल्ड कप के लिए। आई थिंक लिंक जो है वो लिंक ट्री में है, सरखेल ने शेयर किया हुआ है ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी। सो जॉइन द लीग एंड प्रेडिक्ट द आउटकम्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप। मैंने तो प्रेडिक्ट किया था कि हम जीत जाएंगे आज। मैंने प्रेडिक्ट किया था साउथ अफ्रीका जीतेगा, और आज तो ऑब्वियसली पाकिस्तान किया था, हाँ, तो वो दोनों ही LPC हो गई हैं प्रेडिक्शंस। ओशेन भी हम देखो यार लाइन लाइन कंट्रोल करा 140 पे। अच्छा आपको याद होगा Decent कि kicks. चैंपियंस ट्रॉफी पहला मैच हम काफ़ी जिल्लत से हारे थे, जी और उसके बाद हमने शहजाद को ड्रॉप किया था जी और वहाब को ड्रॉप किया था आई थिंक, जी जी जी। और आई थिंक उमर अकमल को भी ड्रॉप किया था। नहीं, उसमें उमर अकमल नहीं था, उमर उसमें अकमल नहीं था। ओपनर दोनों को ड्रॉप किया था हमने आई थिंक। नहीं नहीं, नहीं, अजहर सिर्फ को- शहजाद को ड्रॉप किया था। शहजाद ड्रॉप तो हुआ था आप और ये वहाब बताएं कि drop हुआ अगर था। आप इस टीम के साथ अगर आपने ये करना होगा हाँ। तो किसको ड्रॉप करेंगे? यार ड्रॉप आप इसमें से किसको करोगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा हारिस को ड्रॉप करके आप आसिफ टुल्ला को डाल लो, और फास्ट बॉलर्स में से आप किसी में से एक को बिठा के शाहीन को खिला लो। इतनी कोई चेंजेस कोई ख़ास कर भी नहीं सकते। विव रिचर्ड्स और इयन बिश, द 2 लेजेंड्स इन द IR बिशी जो इनका है ट्विटर हैंडल। लेकिन इयन बिशप की ये अच्छी बात है यार, सब क्रिकेट देखता है, उसको नॉलेज भी है हर प्लेयर Oh yeah, he knows his cricket. 83 for 8. Thomas now coming in. Another short ball, top edge. I think a man will come around to collect this quite ओ comfortably. यार And Hafiz इनके falls. कैचेस आप देखो यार। Hafiz falls similarly to his colleagues to a short delivery. I thought he had control over the short ball today, but I was What the hell wrong. is this performance यार? 83 for 9, 19.3 overs। ऐसे आप बुली हो रहे हो जैसे पता नहीं ये 70s की वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग लाइनअप है यार। ये 130 के बॉलर हैं एक्सेप्ट ओशेन यार। अच्छा, और ये आप याद रखेंगे अभी शैनन गैब्रियल नहीं खेल रहा। शैनन गैब्रियल भी नहीं खेल रहा है यार, वो जो उनका बेस्ट फास्ट बॉलर है। हफीज़ भी यार, तुम तो अच्छे पुल, और ये वो समझ ही नहीं आया। आपने 10 दिन पहले इधर मैच खेला इसी ग्राउंड में यार। अच्छा यार, अब वैसे
मुझे तो पढ़ते हुए समझ नहीं आ रही 83 for 9 का क्या करें हम. मज़े की बात है कि इधर अब ड्रिंक्स ब्रेक भी नहीं होगी, वापस फील्ड में आ जाएंगे और मैच लंच से पहले ख़त्म हो जाएगा. मतलब दैट इज़ द अल्टीमेट बेइज्जती. जैसे मिनोज के साथ नहीं होता कि जी चलो 120 ऑल आउट करके 30 ओवरों में फिर आप आगे 10 ओवरों में चेस कर लो. व्हाट अ शैम्बॉलिक परफॉर्मेंस यार. I don't know. I'm lost for words, and I don't find many moments in my life where I can say that. और अगला मैच भी इंग्लैंड के साथ है, द रेड हॉट टीम. इतने शौक से वर्ल्ड कप पैकेज और वर्ल्ड कप ये वो हमने सब लिए हुए थे कि एंजॉय करेंगे. वर्ल्ड कप शर्ट्स ऑर्डर कर लिए हैं. आगा ने तो कभी हमें होस्ट नहीं करना आइंदा. आगा तो कहेगा जन्नत में जाओ ही तुम लोग. यार नहीं, इसकी मिस हो गई, क्या करें यहाँ पर. मिस नहीं बुरा ना होती फील है करो यार. ये 83 for 9 पे हम बुद्धा हमारे ऊपर है, नकम्मे में. ओ नो बॉल भाई, फ्री. Brother, this is Yahudi Saj's conspiracy against Imran Khan because he's finding corrupt leaders. Yes. Well, speaking of बिग नो बॉल Next देयर week फ्रॉम करना पड़ेगा. ओशिन थॉमस. इतनी बड़ी नो बॉल. यार तुम अब अजीब बात कर रहे हो यार. तुम अजीब देखें, क्रिकेट छोड़े, नमाज पढ़ा करें. यार थोड़ा स्वाइनरी निकाल दो जरा तुम. देखें, मेरे पास आपके लिए एक सबसे बड़े एक एविडेंस है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ. यार वैसे ये नो बॉल पे तो मैच फिक्सिंग का लगता है. पाकिस्तानी बॉलर्स टू शॉर्ट पिच बॉल विकेट. किधर गई है वो क्लिप यार. छोड़ो यार, हमें स्पीचलेस कर दिया इन्होंने. भाई अगर आप काउंटर स्ट्राइक खेलते हैं तो उसके बाद ये अली जफर है. सिंपल टू द पॉइंट बात. makes room and he वहाँ पे swings क्या at this and होना he है completely यार? misses it. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਾਰਟ ਬਾਲ ਖੇਲਣ ਦੀ. Some tears from a man who looks like he's seen enough in his life. So Some hard times. This really shouldn't be new to him. Again, I'm lost for words right now. यार बंदा क्या कहे यार, है ही मनु से. It was quite like far from the crease. Short ball again. This time it's gloved away to the leg side. A little quiet in the studios right now. We're Mohamed Ami है. a little lost for words. We always fix for the other team. मसला ये है यार. अब हम अच्छा, इसी सीरियस होकर जरा आप बताएं. जी जी What do Pakistan need to do from here to win this game? यार, अब मिरेकल्स पहले चाहिए होगा हमें न्यू बॉल के साथ कि जी हम उनको 20 for 4 रिड्यूस कर दें और फिर एक्सट्रीम प्रेशर डालें और ये वो करें. तो वो सब अब बातें तो आउट ऑफ द स्कोप हो गई हैं, क्योंकि अब वहाब और आमिर आ गए क्रीज पे. चलो हफीज़ होता तो एक एंड से शायद हम कहते कि यार एक तरफ से वो बल्ला उठा सकता था, लेकिन वो सीन भी नहीं है. 86 for 9 आफ्टर 20 ओवर्स. ये देखो बेचारे कैसे मायूस लोग बैठे हुए हैं. Very Spending their well-earned money to watch. overpriced ICC tickets that were handed out through balloting. हाँ. And a lot of the boys have come in to see what is a remarkably shit performance from Pakistan today. अब यही हो सकता है कि हम
अंकल तो ठीक ठाक रो रहे यार हैं। ये तो फुल फ्लेज अंकल ने टोपी पहनी हुई है चैंपियंस ट्रॉफी 2017 वाली। फुल फ्लेज हम टीवी वॉचर हैं ये अंकल यार, इतने ड्रामेबाज, हद हो गई यार। वो देखो चिल बॉयज हैं, उनको पता है यार पाकिस्तान शुरू में पहले 3-4 मैच good, bro. We go 8 games together. We go come back. पहले 2-3 मैच तो वैसे ही आप राइट ऑफ कर दो ना पाकिस्तान के किसी टूर्नामेंट में, हमने तो आते ही खच मारना है उधर जाके। बट दिस इज एम्बैरेसिंग, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलो यार Oh! दैट इज अ 6। Wahab Riaz just picks this up as a full delivery this time, and it's straight into deep with wicket for a 6. And now he's our best bowler and our best batsman. अब वो वहाब अब बैटिंग पे हमारे मैच में अगले मैच में खेलेगा भाई, सीन ऑन है। And he's picked him away. It's gone all the way for 6. वैसे प्रोड्यूसर सरफराज, एक तो हमारी थोड़ी ऊपर से आप रवि शास्त्री की क्लिप्स प्ले कर रहे हैं। यार कोई बात नहीं यार। Oh, crowd catch, he's got it. Very well done. Oh, another Oh, attempted lad. hoik, this time straight down the ground from Wahab. He's got nothing in his mind except that long on boundary, but missed it completely. 93 for 9, Pakistan inching away Yaar, that kit bhi elusive achhi 100 hai. mark. किट भी अच्छी थी, टीम भी अच्छी थी, कैप्टन भी अच्छा था, फिर भी हम 80 for 9, ये क्या सीन हुआ हमारे साथ यार। सीन ये हुआ है कि बस यार, वैसे देखो आप इंग्लैंड से सीरीज हारे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हारे हैं, पर इस तरह तो नहीं हारे। लड़के हारे हो और खुद हारे हो बल्कि। हाँ, ये हो क्या गया है आज, ये समझ ही नहीं आ रही यार। अब मसला ये कि हमारे जो ये पंडित्स होते हैं ना, क्रिकेट पंडित्स, उन्होंने अनबेरेबल हो जाना है, उन्होंने ऐसी हमने तो फायरें कहा था, मारनी। हमने हाँ। तो कहा था सरफराज को कप्तानी से हटा दो, बॉलिंग चेंज कर दो, बैटिंग चेंज कर दो। 40 लाख सनू पढ़ाओ। यार वो तनवीर अहमद नहीं है, वो कहता है जी डोमेस्टिक ठीक करने के लिए वो वसीम खान को लाए हैं, एमडी लाए हैं, तो इससे बेहतर तो हमें दे दो। क्यों आप मायूस कुन। 93 for 9 as Pakistan look at a big shot from Wahab, but I think it'll be caught. No, there's no man there, so it'll just trickle away to the boundary. Pakistan all the way to 97 now. 3 more runs for an elusive 100. भाई we might even reach the 3-figure mark यार, ऐसे भी miracles हो सकते हैं। आपको पता है वैसे इस वक्त जो है ना, लग रहा है कि पाकिस्तान का टॉप स्कोरर इस वर्ल्ड कप में एक्स्ट्रा होंगे। एक्स्ट्रा से तो हम हमेशा ही परफॉर्म करते हैं हमारे लिए टूर्नामेंट्स में, इस दफ़ा भी करेंगे यार। वो देव नेवर लेट अस डाउन। एक्स्ट्रा उल हक who is Pakistan new addition लास्ट to 12 this बॉल्स batting 14 lineup. रन्स, भाई इतना तेज क्यों खेल रहा है पाकिस्तान भाई, इजी हो जाओ यार। ओवर्स खत्म हो रहे हैं, 20 ओवर हो गए हैं, तुम बात कर रहे हो। 97 for 9, the run rate still looking healthy. यार। कहाँ हमें ये कहाँ हम इमेजिन करके आए थे यार 320 का पिच, और हमसे 100 नहीं हुआ यार। I think Jason Holder with his sweater coming in. Oh, that is a big 6 from Wahab Riaz. What a shot into the crowd. Short delivery, and he pulled it away. I think he got a bit of a top edge, That is a ridiculous hit. but That's colossal. it sails into over square leg boundary for 6. 100 हो गए भाई, 100 हो गए भाई। And आपने एम ही अंडर एस्टिमेट किया हुआ है पाकिस्तान को। Khwaja Agha ne pucha कि is 120 going to be enough for Pakistan? I reckon it will be. You know, it's a decent looking pace attack. They've got Hassan, Amir, and Wahab, यार Shadab, एक and ओवर Ahmad, दो and उसने Hafiz. होइक्स क्या मार ली, आपकी सारी इक्वेशन ही बदल जाती हैं भाई विन विज निकालो, क्रिक विज कितना हुआ हमारा होगा। चेक करते हैं यार। 88% हो गया होगा पाकिस्तान के लिए। I'll take a look at मतलब this is like मतलब सोने पे 6 for 41 in the middle overs यार। Makes room again. This time he goes for a Oh, full delivery bhai. to Thomas, and he misses the stumps. Muhammad Amir, he's batting as well as he's bowling these भाई days. विकेटें तो कवर कर, उसको सपोर्ट तो कर ले यार थोड़ा बहुत, क्या हो गया। शायद अगर 140-50 तक भी घसीट लें अगर किसी मिरेकल से, तो कुछ भी हो सकता है। We are live on Instagram right now, so you can see how बेबस एंड बेहाल एंड हमारी शक्लें जो हैं वो बेहिस। कितनी- बस मैं क्या बोलूँ अब आपको। यार मुझे ये रेड इंडियन वाले किट इनका कुछ समझ नहीं आया जो इनके क्राउड ने पहना हुआ है, उसका अच्छा, अब उनसे आप क्या लिंक है मतलब क्रिकेट से रेशियल टेंशन्स पे फौरन। यार। रेड इंडियन तो सेंसिटिव बनता है ना कम से कम। Short ball again. This time it was supposed to carry to point, but it doesn't.
weird. Gopi Mia Kawal is really trying hard to find the silver lining here. सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक अच्छी मूवी थी, आपको देखनी चाहिए सबको. And Ahmed is saying Wahab is proving his worth. Wahab, who was not even in the 30-man shortlist, who was not even in the World Cup squad, Ridiculous. who was not even in the England squad, is now he's playing in a World Cup. ये हमारे कमाल है भाई. Makes room, slashes hard at it, Amr. And it's a no ball again. Oh, So Pakistan will get another another goal. free hit for Pakistan. देखते हैं भाई, scene on है भाई. Windies are collapsing under the pressure of Wahab. That's ये तो nothing behind the line. No, है I यार, think nothing behind the line. there is enough behind the line. I don't think that should have been यार given. उसको पहले ही आपने 3-4 विकेट दे दी, अब आप नो बॉल भी हमसे छीनना चाहते हो यार, क्या हो गया? थोड़े तो The umpiring has been नहीं questionable. दे दिए free hit. No, You it's can't still a free review hit. these things, I think. Oh! Some innovation Oh, there from Dre Amr, thoda moving pulling away up with to some- his 6 or 7 stump and just clipping away to the leg side for a single. 105 for 9. भाई बंद कर दो ना, हमें देखो ना, मैच को देखो. कोई ख्याल नहीं है यार रोजे का या रमजान का यार, ऐसे ही है बस. Zishan's just come in and he's rocking a West Indies kurta. Men in maroon. चलो और ड्रे काम करके अब इंजर हो गया है हमारे खिलाफ, यानी No वाह, doubt, no वाह, doubt. वाह, क्या बात है. उनको बोलो आप शेरो शायरी कर लें, हम क्रिकेट बंद कर देते हैं. Wahab 18 off 10, a pretty healthy strike rate for him. So what happens if they make it to 200 here? What happens then? फिर तो यार गेम ऑन है यार. There it is. First of all, I think 180 पे भी गेम ऑन है यार. क्रिकेट पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बन जाएगा अगर हम 200 पे पहुंच. नहीं 11th wicket partnership I think है, इससे बड़ी है. आई थिंक इतनी होगी 70-80 है, 70, लेकिन ये yeah. तो 100 प्लस हम गिनने पे आ रहे हैं ना. But by the way, both of these gentlemen can bat a bit because Amr played that innings against Sri Lanka and Wahab is all right. हानी वहाब भी ठीक है, उसने वर्ल्ड कप में 50s मारी हुई हैं आई बिलीव. 40 तो एटलीस्ट उसने डेफिनेटली मारा हुआ है. Shout out to all 2 of you on Instagram Live for watching us. Makes room and he's bowled And him. he's bowled him. There's the end of Bye bye. 105 A all out. full delivery from Thomas, and Wahab played all around it, middle stump, knocked back. Pakistan are all out for 105. I'll just say that again so people realize what's happened here. Pakistan are all out for 105. They've just played 21.4 overs. The short ball ploy has worked tremendously for the West Indies. Jason Holder with 3 wickets, Thomas with 3 wickets. I really don't have much to say about the 4 second for innings. I might 27 just O'Shea. leave. Khwaja, what are your thoughts? यार प्योर शैम्बल्स, जो उनका एक ही प्लान था कि भी शॉर्ट बॉलिंग करानी, उन्होंने मुसलसल यही कराया. और आपके आई थिंक 9 out of 11 बैट्समैन, 9 out of 10 बैट्समैन ऐसे ही आउट हुए हैं. फेंडिंग अवे, पुलिंग अवे, गेटिंग हिट ऑन द हेलमेट, स्लैशिंग एट अ वाइड बॉल, सारे शॉर्ट बॉल वाले डिसमिसल्स डाउन द लेग साइड, अजीबो गरीब. Pakistan have gone from 62 for 4 to 105 all out. There's no amount of statistics, weather reports, or I don't know, prayers that I can give you right now to say that we have hope in the second innings. But the only thing I can say is that we've seen crazier things happen. यार आप महीने डेढ़ से इधर आप इंग्लैंड आए हुए हो और आप प्रैक्टिस मैच खेल रहे हो और आप जल्दी आए हो और आपने इंग्लैंड के साथ फुल सीरीज की, ये अंजाम देने के लिए स्पीचलेस यार. देयर इज नथिंग लेफ्ट टू से. Well, आपने प्रैक्टिस मैच खेल ली, आपने इंग्लैंड के साथ वनडे सीरीज खेल ली, T20 खेल ली, आपका पूरा स्क्वाड इधर 2 महीने से आया हुआ है, फुल प्रेपरेशन है, आपको टफ सीरीज भी मिली है अच्छी टीमों के खिलाफ कि आप थोड़े तगड़े हो जाओ, और फिर जब रिजल्ट देने का वक्त आया तो आप 105 पे ढेर हो गए हो अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, अ लोअर रैंक्ड साइड. Again, बंदा क्या बोले. we're going to sign off for this innings just to understand what's happened here, and if we want to continue with Change of Pace as a project as a whole. If you do have a little time on your hands, join our cricket, They will be back cricket- after 10 minutes. It's not even going to there's be not a going to long be an lunch innings break. break, but we'll be back after 10 as well. If you have a little time on your hands, join our Cricket Pick League. We've made a group on ESPN Cricket Info. जो सारी prediction थी हमारी गलती आएंगी because we predicted that we're going to win today. We'll catch you in 10. I don't know, अगर कोई नफले शफले पढ़नी है उसके दौरान तो please पढ़ लें. See